हेलो एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। मैंने जोश में अपना पीसी खराब कर लिया है, तो अब मैं लाइव आया हूं अपने लैपटॉप से। मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें, भगवान जाने जो भी दिक्कत है। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC, वेलकम बैक टू वन अदर लाइव स्ट्रीम। मैच हमने देखा, देखने लायक नहीं था, इसीलिए मैं अपना पेन बांटने के लिए नेथन को लेकर आया हूं। विल टॉक अबाउट दैट डील। ऑब्वियसली ज्यादा बात उसी चीज पे होगी, लेकिन जितने भी लोग हैं चैट में सबको मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। जहां से भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा की माँ की आंख, भाई कैमरा नहीं, एक्चुअली ये मैकबुक में कोई दिक्कत है, मेरा मैक कनेक्ट नहीं कर रहा है कैमरे से। भगवान जाने जो भी इशू है, अब मुझे देखना पड़ेगा जो भी सीन है। बट नेतन, मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना, हियर वी गो। लास्ट नाइट वी गॉट अ हियर वी गो फॉर ब्रायन एम्बुएमो, व्हिच इज अ बिगर हियर वी गो। चैट, आप ये सवाल है मेरा तुम्हारे लिए पर्सनली, यहां पर बड़ा हियर वी गो कौन सा है? इज इट मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना या फिर ब्रायन एम्बुएमो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? Brian Mbeumo to Manchester United, because it's so funny. Can you hear me? No, Can you hear me? yeah, I Okay. can hear you. मैं अपनी वाइफ को No, बोला था कि that's fine. Yeah. It's so funny. A gentleman, apologies, I forgot the name because we actually addressed it. But he gave us 3 options, and one was loan with no obligation to buy. yeah, And we both said the first one is the worst option. yeah, Less than 24 hours later, that is exactly the deal we made. And yes, this just enforces that these people are worse than our prior owners. It just enforces it. Because the whole point of getting rid of the quote unquote famous five is to yeah. actually get money so we can use that money. A loan that covers his wages does actually nothing for us. Now, people will say, at least we don't have to pay him. Yeah, but the point of By the way, getting we are rid of not them getting was to any get loan money. fee. Also, No just to let loan you, fee. Yeah. no loan fee. So we are not getting anything. I mean, it's horrible, but people will tell you good riddance. Good riddance is great. These kind of things now is good when you have money, good when you're doing well in the league. It is not good when we are 15th and have no money. Literally the worst option. Someone said it yesterday. It's crazy. It's really crazy. Literally that option happened. People are Amlan is saying, Amlan Ahmad, shout out. He say 100% wages saved. I agree by it is 100% wages saved, but the point of selling them was for money. Otherwise, we can use them for us. Not Rashford, obviously. Nobody wants him, but it's just an example. Like the whole point was we get some money, whatever the money is, we would get nothing. I don't know. A lot of people are saying Mbeumo. Some people are saying it's a W transfer. Fair enough. इस पर ना मैं एक चीज बोलूंगा। देखो, इट फील्स लाइक अ डब्ल्यू टू मी बिकॉज वी आर गेटिंग रिड ऑफ समबडी हु डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द क्लब, एंड जिसको लेकर मैनेजर भी बिल्कुल ऐसा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैं यूज नहीं करूंगा। सो रेदर देन कीपिंग हिम एंड पेइंग हिम हिज वेजेस, आई थिंक इट्स बेटर टू लेट गो ऑफ हिम। बट हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी मैनेजमेंट से। They are not getting any loan fee for Marcus Rashford. Marcus Rashford has taken a massive wage cut. He won't be earning anywhere close to what he was earning at Manchester United. तो भैन चोद ये बताओ, हमारी मैनेजमेंट को इतना समझ में नहीं आया कि भाई इसमें तुम्हें बेनिफिट मिल क्या रहा है। अगर देखा जाए तो लॉजिकली एवरीथिंग इज फेवरिंग बार्सिलोना एंड मार्कस रैशफोर्ड। ओनली मतलब यूनाइटेड इज ओनली गेटिंग बेयर मिनिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस डील। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि आप जो 300 के पर वीक पे कर रहे थे मार्कस रैशफोर्ड को,
और लोन पे जाने के बावजूद आपको एक सर्टेन पे वेज जो था उसका पे करना पड़ रहा था while he was at एस्टन विला एज वेल। अब आपको वो चीज पे नहीं करनी पड़ेगी। बट द पॉइंट हियर इज, तुमने इतना गंदा मार्केटाइज किया मार्कस रैशफोर्ड को, एंड द सेम कैन बी सेड अबाउट गर्नाचो एज वेल। तुमने इन दोनों प्लेयर्स को, तुम्हारे सबसे बड़े सेलेबल एसेट, तुमने इतना गंदा यहां पर मार्केटाइज किया कि तुम्हें इनको कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है इन प्लेयर्स को। एंड लॉजिकली देखा जाए, मार्कस रैशफोर्ड इज बेसिकली गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल डील, क्योंकि नो अदर क्लब वाज रेडी टू गेट हिम ऑन बोर्ड। यूवेंटस ने इंक्वायर किया, बट यहां पर वो उसको नहीं लाना चाह रहे थे। अदर क्लब्स बायन वगैरह भी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड थे भी या नहीं थे, वी डोंट नो। ओनली बार्सिलोना, और बारसा भी तब गई है, मेक नो मिस्टेक, बारसा तब गई है जब निको विलियम्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया। निको विलियम्स ने उनका चूतिया काट दिया, और लुइस डियास एक ऑप्शन पॉसिबल लग नहीं रहा था, बिकॉज जो अमाउंट लिवरपूल डिमांड कर रही थी। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि बारसा का प्राइम टारगेट था मार्कस रैशफोर्ड, बट मार्कस रैशफोर्ड की प्राइम लोकेशन, जो प्राइम बेसिकली क्लब थी, डेस्टिन्ड थी उसके लिए, दैट वाज बार्सिलोना। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल डील यहां पर ऑल थ्री पार्टीज इंक्लूड करके अगर जिसको मिली है, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। बट अगेन यही बोलूंगा मैं कि गुड रिडेंस है, बिकॉज ऑब्वियसली he was somebody who's not going to be part of the club going forward into the season। तो इससे बेटर यही है कि भाई कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है, तो हमने यहाँ पर उसको ऑफलोड कर दिया है। बट ऑनेस्टली बताऊं तो मार्कस रैशफोर्ड विल डिलीवर बिग टाइम। आई थिंक ही विल डिलीवर बिग टाइम, बिकॉज उसको पता है दिस इज हिज लास्ट चांस टू प्ले फॉर अ बिग क्लब, एंड इफ ही फेल्स एट बार्सिलोना, नो बिग क्लब विल गो आफ्टर हिम, क्योंकि ऑलरेडी इतने कम ऑप्शंस थे उसके पास, राइट? तो जो भी है सीन अब यहाँ पर, बट हाँ, बार्सिलोना में जाकर रैशफोर्ड विल डेफिनेटली इंप्रूव, क्योंकि हांसी फ्लिक ने करवाया है, निकलवाया है आउटपुट गधों से भी, तो वो मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्रोबेबली यहाँ पर अच्छे डिसेंट प्लेयर से आउटपुट निकाल ही लेगा। बारसा को चाहिए था एक ऐसा लेफ्ट विंगर, और अगर देखा जाए तो यार लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला डील है ये, क्योंकि आपने ऑब्लिगेशन टू बाय पे साइन नहीं किया, आपने ऑप्शन टू बाय पे साइन किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आपको साइन करना है नहीं करना है, वॉट एवर द थिंग इज। ऑप्शन टू बाय अगर हो है तो ऑब्वियस सी बात है यूनाइटेड को यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दे हैव द राइट कि वो ट्रिगर करना भी चाहते हैं वहां पर उसका जो ऑप्शन टू बाय का एक क्लॉज होता है वो या नहीं। ऑब्लिगेशन टू बाय होता तो यूनाइटेड फिर भी होपफुल होती कि भाई चलो जो भी हो रहा है यहाँ पर ये कम से कम साइन करेंगे, अगर नहीं भी साइन करेंगे तो इनको एक पेनल्टी फी देनी पड़ेगी हमको। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है ये सीन। लिवरपूल स्टिल इंटेंड टू मूव फॉर इसाक इफ गिवन एनी एनकरेजमेंट, वेदर नाउ और फ्यूचर विंडोज। आई थिंक यार देखो, लिवरपूल एक्सप्लोर तो करेगी, लेकिन अब ह्यूगो एकिटेके को लेकर जो उनका स्टांस है वो बहुत कुछ यहां पर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है उनके अप्रोच में फॉर एलेक्जेंडर इसाक। अब देखना होगा भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट नेथन, a serious question to you and to everybody in the chat: how many goals do you expect Marcus Rashford to score in La Liga? I'm expecting 20. I'm expecting 15. I don't think he's going to get as much game time as we think he is. I don't know. I'm just a feeling. I'm expecting 20 20. because The thing, Rashford. the thing is, I hear, I'm watching, looking at everyone in the chat. They're saying we save like 30 million and 350K a week. We don't actually save 30 million because there is no guarantee they will be bought. You can't save money that is not earned. They can just send him back to us. We don't even know if there's going to be a penalty fee. I hope there is. There is no loan fee. Hopefully there's a penalty. With if he, but there won't be a penalty because it's an obligation. It's an option to buy, not an obligation to buy. So they could very well just send him back and he's up. See, this is the exact same thing, the same Anthony situation, right? He did well. He came back and he's still not gone. We saved the wages for 1 year, but that's all we saved. The whole point of this process was we sell them so we can buy players. I get it. I'm with all of you guys. Thank God we got rid of him. Like no problem. But the point of getting rid of him was for money. So let me put it let me put it in a better way. Tomorrow Rashford takes his bags. He says thank you. See you next year or whatever. The first headline we'll read from a journalist will be, because Manchester United have loaned Rashford, there's no money coming in, which will mean making further deals more difficult because additional signings were depending on outgoings. Now, outgoings means money is coming in, not loans.
Yeah. So for me, I feel like we have put ourselves in a worse position that way. But as long as he's not playing for our team, I'm okay with that, because that also creates a problem. But the whole point is, how does it affect our players that want to come or players we want to sign? That is what I'm worried about. I think Rashford will play majority of the games because Ferran, he's good, but I feel यहाँ पर Rashford can be a backup to Lewandowski. Rashford is a out and out winger as well, and Rafinha will shift back to number 10 position. So in that way, Rashford will have the majority of the game time. बाकी देवांश के लिए तो आज भाई एक बहुत बड़ा दिन है because his club has just signed the first signing of the season, and what a good news भाई to begin with. भाई Do you? big W भाई North Campus, Lovely. big W. Big W. I want to Tough share good news. college. My sister got admission in DU North Campus. भाई एक बार W's spam हो जाए देवांश की बहन के लिए, हमारी बहन के लिए एक बार W's spam कर दो guys in the chat. What a big news, right? Many congratulations to Devansh and to the sister. गॉड आईजीएल कह रहे हैं यहाँ पर 22 महीने पूरे करने, क्या बात है, क्या हाल चाल, क्या हाल चीचा मोक भाई, होप एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड मेरे भाई. बस आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई है जो हम हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जल्दी निकल के आएगी. आदित्य कह रहा है, आदित्य थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन. आई एम सॉरी बट नेथन लोकी विदाउट हेयर लुक्स लाइक एमओ. आई एम सॉरी फॉर दिस. अरे नहीं भाई, I'll आई थिंक take it. ब्रायन तो वैसे I'm भी still on a high. I'll take it. नहीं. करमजीत कह रहे हैं यहाँ पर 21 महीने पूरे कर लिए. हाय नेथन एंड मोहक भाई, इट शुड बी एन ऑब्लिगेशन टू बाय. होप ही परफॉर्म्स वेल. वी माइट गेट 40 मिलियन नेक्स्ट ईयर इफ रैशफोर्ड पुट नंबर्स. ही विल पुट नंबर्स, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर दैट फॉर श्योर रैशफोर्ड इज गोइंग टू पुट सम नंबर्स. बट यू नो व्हाट विल बी द बिगेस्ट डब्ल्यू? You know what will be the biggest W? Sancho leaving Manchester United will be the biggest W of this transfer window. I'm not even kidding. Even the rivals will celebrate this because he has been a pain in the ass. The guy is continuously posting on social media. I haven't seen a shameless guy जितना वो है भाई, सीरियसली बताऊं. जिस दिन जेडन सैंचो क्लब छोड़ के जाएगा, that would be the biggest transfer. That would be the biggest transfer for. I think I'd buy my first ever non-United jersey. I promised people I would never buy a football jersey. I think I'd buy a Juventus jersey with Del Piero on the back just to celebrate. Just to celebrate. Even I would buy. Honestly, आज ये साला I don't like buying other football clubs jerseys. It's a weird thing I have. I buy NBA, NFL, whatever, but I feels weird. But I think I would buy a Juventus jersey, maybe with a Ronaldo at the back. Who knows? Why Del Piero? Put a Ronaldo at the back. we might. But also यहाँ पर ये जो शुभम ने लिखा है, इस पर आएंगे शुभम. थोड़ा सा ना रैशफोर्ड वाली डील पे थोड़ा और बात करते हैं because it is something to talk about. Chat, I want to know what would you have done अगर तुम मैनेजमेंट लेवल पे होते for United managing this transfer. Wouldn't you have posed an obligation to buy इस सीन में because you don't want to keep Marcus Rashford irrespective of Ruben Amorim रुकता है नहीं रुकता है. Reason I'm telling you is the management doesn't want to keep him. Forget about the manager. यहाँ पर जिम रैटक्लिफ ने पब्लिकली जो इंटरव्यू दिया था आपके गैरी नेवेल को, उसमें बोला था दैट ठीक है his days are over and ये और फलाना फलाना. तो मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू कीप हिम बियॉन्ड अब जो भी सीन चल रहा है उसका. तो wouldn't you have wanted कि भाई यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन टू बाय होता? बिकॉज अगेन बारसा वुड नॉट एक्सेप्ट इट. भाई देखो बात ये है कि बारसा को भी प्लेयर चाहिए था, यूनाइटेड को प्लेयर बेचना भी था. सीन ये था कि बारसा के पास पैसा नहीं था कि वो यहाँ पर लुइस डियाज के लिए बिड कर लेते. ऑलरेडी यहाँ पर आपके निको विलियम्स ने उनका चूतिया काट दिया पूरे समर विंडो में. यहाँ पर जितनी भी देर रहा वो, उसने ये जताया कि भाई आई विल ज्वाइन बार्सिलोना, फॉर श्योर आई एम गोइंग टू जॉइन बार्सिलोना. नहीं पता था बारसा को भी. भाई यहाँ पर तुम ये सोचो जो करस्पॉन्डेंट एथलेटिक क्लब के, उनको भी नहीं पता था कि भाई निको विलियम्स इज गोइंग टू स्टे. तो डेफिनेटली यहाँ पर बारसा के पास भी थोड़ी टफ सिचुएशन थी कि उनके पास भी मार्केट में राफेल लियाओ वगैरह को उठाने का भी पैसा नहीं था. तो इफ वी वुड हैव ट्राइड, हम यहाँ पर फोर्स कर सकते थे कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन टू बाय की डील विद नो लोन फी इंक्लूडेड, बट यहाँ पर विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय. बट कहीं ना कहीं यही नेगोशिएशन पावर आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब आप पब्लिकली ये चीजें ऑब्वियस कर देते हो दैट यू डोंट वांट टू कीप दैट पर्टिकुलर प्लेयर. जो भी सीन है भाई, मार्कस रैशफोर्ड is going to play for Barcelona. All the best to him. I wish him all the best because जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वो नंबर्स पुट अप करने के बाद अपना मार्केट प्राइस राइज कर लेगा. लेट्स से कि यहाँ पर बारसा नहीं भी रखना चाहती है उसको, तो भी कोई ना कोई और क्लब तो डेफिनेटली आएगा मार्कस रैशफोर्ड को लेने के लिए, क्योंकि वो परफॉर्म करेगा बार्सिलोना के लिए. तो अगर वो बड़े क्लब का प्रेशर यहाँ पर एब्जॉर्ब करके डिलीवर कर पाएगा,
I think most of the big clubs will come and try to get Marcus Rashford on board. Shakti, thank you so much for joining the membership. Welcome on board, मेरे भाई. I beg to differ, मोहक भाई. Salary of Rashford is very high and wage cut लेकर भी वो मैक्स टू मैक्स 200 के पर वीक तो लेता है यार. उसकी जो ग्रोस सैलरी है वो 10 मिलियन है, जिसमें आपके एडॉन्स वेडॉन्स सब इंक्लूडेड है. जो उसकी नेट सैलरी है वो 5 मिलियन बताई गई है. तो 5 मिलियन के हिसाब से कितने वेजेस हुए उसके? 92 के पर वीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 92 टू 100 के पर वीक के कुछ उसके नेट वेजेस हुए, वीकली वेजेस. तो पता नहीं ब्रो, आई डोंट नो. हाँ मतलब उसके ग्रोस वेजेस जो है वो जाकर आपके 200 के पर वीक पे बैठेंगे. बट इफ दिस इज द केस भाई, रैशफोर्ड अगेन कुडोस टू हिम कि उसने यहां पर अपना मूव फोर्स करने के लिए इतना मैसिव वेज कट लिया है. बट दिस ऑल्सो शोज कि कितनी खराब नेगोशिएशन स्किल्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड की while offering new contracts to these players. क्योंकि यही से मार्कस रैशफोर्ड was not ready to take 250k per week at Manchester United, but he has accepted 100k per week का offer net salary पे while playing for Barcelona. That really tells you a lot. Rashi is nothing more than 150 to 200k per week. Absolutely, ये तो बिल्कुल सही बात है. He is nothing more than that. एंड रंजन कह रहा है यहाँ पर लेट्स गो, आई कैन सी हिज हंगर टू विन विद अस. नहीं, दैट आई कंप्लीटली एग्री. मार्कस रैशफोर्ड विल पुल अप हिज सॉक्स. Marcus Rashford will definitely step up and Marcus Rashford will definitely put up a show for all Barcelona fans because he wants to prove a point कि भाई मेरे साथ यूनाइटेड में गलत हुआ है एंड वो ये चीज प्रूव करने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा देगा. बट नेथन, नाउ दैट रैशफोर्ड इज गॉन, डू यू सी एनी प्लेयर आउटगोइंग के तौर पे जो है हमारे गर्नाचो और एंटनी में से, क्योंकि सेंचो इज गेटिंग सोल्ड फॉर श्योर, डू यू सी एंटनी स्टेइंग एट यूनाइटेड एनी हाउ, मतलब इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज देयर आर रियली नो ऑफर्स फॉर एंटनी एज वेल. I mean, I have a preference of which one of the two I want to stay, talent wise. But I think the one that will create the less issues and issues between the fan base and the management and staff, I think, is Anthony. The thing I hope is that we use this. It's getting to we are having a little bit of an issue now. Today, when you watch the game, the sheer amount of number 10s we have is frightening. And that is why I don't understand that why have we still not gone for a pivot midfielder. Like, I'm happy with Mbamo, I'm happy with Cunha, but if you just look at the number of people in the roles, we should have actually never gone for a 10 first. So the reason I'm saying I would keep Anthony is because I think Anthony will be more than willing to play right wing back. See, whatever we think about Anthony, whatever he will be. He is game. He is game. If you tell him to put on the shirt and get on the pitch, it's a simple. How good he is, you can argue, but 100% he's game to go on the pitch. 100%. That though I will not take away from him. You have to give it to him. Nathan still don't want Ghana to be sold. I mean, based on the two options, the one with more talent is the one I would normally keep Makran, but the one that creates the divisiveness, I don't want anymore personally. I'm very happy to keep Anthony. If Anthony is the last man standing out of the famous five, I'll be very happy with that. He is the only one I think we can all consensusly agree that he is the least damage and most able, capable, and professional player out of the five of them. That is my opinion. I think he's easily the most professional out of the five of them. And I think he has momentum from last season. I think we can use him to our benefit. यार ये चीज ना आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हो सकती थी, बट अब इट्स गोइंग टू बी एम्बापे वर्सेस यमाल एंड नॉट एम्बापे वर्सेस मार्कस रैशफोर्ड. आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड हैज लेट डाउन हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड द पोटेंशियल. जैसे कि अभी हम आज वॉच अलोंग पे ये बोल भी रहे थे कि he was Mbappe before Mbappe because जब वो आया था सीन पे ब्रेक हुआ था, he was scoring goals for fun. उसने अपने दोनों मैचेस में, उसने यूरोपियन डेब्यू में भी ब्रेक स्कोर किया एंड अगेंस्ट मिचलैंड, एंड देन उसने आर्सेनल को के अगेंस्ट जब अपना पीएल डेब्यू किया था तब भी उसने यहाँ पर ब्रेक स्कोर किया था. तो ही ब्रोक ऑन द सीन एक बहुत ही मतलब गांड फाड़ प्लेयर के तौर पे. बट वही वाली बात है कि he never fulfilled his potential which he could have because initially he was a very serious player. but अब ये भी बात है, देखो अभी बारसा फैंस यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा उसके रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू जॉइन योर क्लब, यू विल सी फॉर योरसेल्फ एंड आई होप ही डज वेल. बट एक प्लेयर जिसके
साथ सारे मेजर्स की प्रॉब्लम रही है। अगर आप यहाँ पर जोजे की बात करोगे, जोजे हैड इश्यूज विद रैशफोर्ड। ओले ने इनडायरेक्टली ये चीज बताने की कोशिश की दैट यस सम ऑफ द प्लेयर्स वर नॉट फोकस्ड एंड दे वर नॉट, मेरे हिसाब से मतलब जो उसने बोला था, उसने स्टिक टू फुटबॉल वाले शो में भी जब वो इंडिया आया था, कि दे वर नॉट रेडी टू पुट अप देयर 100% एफर्ट ऑन द फील्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द क्लब। फिर आपने देखा टेनहैग के अंडर भी सेम इशू हुआ एंड नाउ रूबन एमरिम कॉल्ड हिम आउट पब्लिकली। उसने ये तक बोल दिया कि मैं अपने गोलकीपिंग जो कोच है उसको खिला दूंगा बिफोर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू समबडी हु इज नॉट रेडी। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भाई डेफिनेटली यहां पर मल्टीपल मैनेजर के साथ अगर किसी एक प्लेयर के इश्यूज हुए हैं तो उस प्लेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी ये जो एक लेटेस्ट अपडेट आई है दैट यूनाइटेड वांट टू इंक्लूड एक पोटेंशियल पेनल्टी क्लॉज फॉर बार्सिलोना इन केस दे डोंट टेक द बाय ऑप्शन टू साइन मार्कस रैशफोर्ड एट द एंड ऑफ द 2025-26 सीजन। भाई अब देखो ये है कि दे वांट टू इंक्लूड, एक वो चीज है, बट दिस शुड हैव बीन एक ऑब्लिगेशन टू बाय अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये ऑब्लिगेशन टू बाय होता तो कहीं ना कहीं ये चीज होती। ओले वाज इज अ सो स्वीट हार्ट मैन अनलाइक एमरिम। देखो एमरिम, व्हेन यू मैनेज अ क्लब लाइक यूनाइटेड जिसमें इतने सारे मिसफिट्स हो, तो आपको एमरिम की तरह होना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर स्वीट बन के इन प्लेयर्स का ईगो हैंडल नहीं कर सकते। ओले वाज एक्स्ट्रा स्वीट, इसीलिए उसको सैक होना पड़ा। माइट बी, मतलब एमरिम माइट आल्सो गेट द सैक, बट अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि कम से कम एमरिम जो गलत है गलत को दिखा तो रहा है पब्लिक को कि भाई ये गलत है। ओले वाज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ओले, पहली बात तो ये था ही वाज लेजेंड ऑफ द क्लब, तो कभी भी क्लब की इमेज को उस तरीके से पुट अप नहीं कर सकता था। दूसरी चीज, बिकॉज ही वाज अ लेजेंड, तो उसके सामने एक चैलेंज भी था कि भाई मैं ना अपने क्लब को, जो मैं जिसको मैनेज कर रहा हूं करेंटली, उसके प्लेयर्स को ऐसे पुटअप नहीं करना चाहता कि भाई दीज आर नॉट फोकस्ड इनफ, और क्लब ने गलत प्लेयर्स के ऊपर गैम्बल खेला है, दैट टू गाइस कमिंग थ्रू द एकेडमी। तो वो उसके ऊपर प्रेशर था उसको हाइड करने का। आयुष कह रहा है यहाँ पर, थैंक यू सो मच आयुष, 35 मिलियन का बाय क्लॉज इंक्लूड है शायद इस डील में। बाय क्लॉज है लेकिन वो ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है ना, ऑप्शन टू बाय। अब ऑप्शन टू बाय पे ट्रिगर करती है बार्सिलोना या नहीं, वो देखना होगा। और यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऑप्शन टू बाय है तो पेनल्टी कैसे, बट कहीं ना कहीं कुछ और एग्जैक्टली। क्लॉजेस भी होंगे। ऐसा नहीं है, कोई कहीं ना कहीं कुछ और हिडन क्लॉज होंगे इस डील में कि सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स अगर रैशफोर्ड खेलता है तो फिर वो ट्रिगर हो सकता है ऑब्लिगेशन टू बाय। कुड बी दिस डील, क्योंकि अभी हमें एंटायर स्टोरी पता नहीं चली है। अगर यहाँ पर ये लगा रहे हैं पेनल्टी क्लॉज तो ये होगा कि 70% ऑफ द गेम्स अगर रैशफोर्ड खेलता है, और देखो खेलना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रैशफोर्ड नंबर्स पुटअप करेगा और अगर रियल मैड्रिड और अगर बार्सिलोना की एक टाइटल फाइट बहुत क्लोज चल रही होगी तो डेफिनेटली बार्सिलोना को खिलाना पड़ेगा। तो हो सकते हैं ये सारे क्लॉज डले हों कॉन्ट्रैक्ट में, जो इसीलिए यहाँ पर कोई भी आपकी लोन फी एक्सेप्ट नहीं की आपकी यूनाइटेड ने और सीधे आपके सिर्फ ऑप्शन टू बाय पे दे दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लॉजेस तो ऐड किए ही होंगे ना, इतने इजीली तो नहीं दिया होगा। टू बी ऑनेस्ट रैशी बारसा इसलिए जा रहा है क्योंकि बारसा डियाज नहीं ले पाई। अब रैशफोर्ड को लेजिट आग मूतना पड़ेगा तभी वो उसको परमानेंट करेंगे, वरना आई डोंट सी हिम परमानेंटली देयर। इवन आई डोंट सी हिम परमानेंटली देयर। अगर रैशफोर्ड वो एक शो जो हम उससे एक्सपेक्ट करते थे यूनाइटेड में अगर वो पुट अप नहीं कर पाता है, आई थिंक ही नीड्स टू प्रोड्यूस एक टेनहैग के डेब्यू वाला सीजन, वैसे कुछ स्टैट्स जहां पर ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो अगर वो वैसा कुछ सीजन पुटअप करता है डेफिनेटली यहाँ पर बार्सिलोना उसको लेना चाहेगी। बट अगर वो नहीं कर पाता, आई हार्डली सी रैशफोर्ड बियॉन्ड दिस सीजन प्लेइंग एट बार्सिलोना। बीजी थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर द कंट्रीब्यूशन। मोहक आई एम श्योर, sorry Mohak, I'm a huge Bruno fan, but in this system with two number 10s, how will he succeed in a double pivot? Midfield looks slow and him and Casemiro plus my comments on Bruno. ये तो आई थिंक एमरन ने भी बोल दिया। नेथन इस पे व्हाट्स योर टेक? We said this yesterday, right? I told you I feel like the midfield is slow. We need to get a double pivot midfield. If we don't get a striker, I don't think we put Bruno at false nine. I think we put Cunha at 9 and we put Bruno in his place and just get a pivot midfield. Still, Rios deal is not done, dude. There are bargain basement buys available. Money or no money, no, there is enough money for certain players that we can definitely still afford. It's not too late. People are, when we talk about 70-80 million and say we don't have money, no, that is true. You can't say we don't have money for 25 million euros. Yeah, that's 17 million pounds. If we sold Rashford, even if we sold Rashford for 30 million pounds to Barcelona, we could have used that money for years. Even if we sold him for 25, we could have easily done a cut deal price sale for him to Barcelona, so we could have used that money to buy even a Rios.
That's why I'm saying like the loan while everyone is happy. The whole point of getting rid of these players is for money to come in. Money is not coming in is again the same problem. Um, I honestly we need a pivot midfield. Oh God, are we going to talk about the game? I just want to know. Otherwise, I'll just ask you directly. Are we Yeah, going to talk about the game? Because I have a question to ask you, which we will I we don't will talk know. about we will talk Okay, about okay, the fine. we Okay, will fine. talk about the game. Talking about this comment from BG, मैंने अभी Yeah, GSK. देखा पढ़ा भी, अभी बाकी अपूर्व का भी कमेंट पढ़ा that we should have sold Bruno Fernandes. See, I know and I understand, but this was the first game of the preseason. I won't get carried away. I won't judge every player इतना मतलब बहुत ही high scrutiny point of view से. Yes, Bruno cannot and should not play in the double pivot because that's not where he thrives. बट उसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, हम नंबर 9 कूनिया खिलाने वाले हैं, हम नंबर 9 या फॉल्स 9 एम्बेमो खिलाने वाले हैं, बिकॉज जब तक उन दोनों में से कोई एक फॉल्स 9 या नंबर 9 नहीं खेलेगा, ब्रूनो हैज टू प्ले इन द पिवट रोल. मेरे हिसाब से सेकंड हाफ लुक्ड मच मोर बैलेंस्ड पहले हाफ के कंपैरिजन में, बिकॉज वी हैड बेटर कंट्रोल ऑफ द गेम. पहले हाफ में तो वी वर एब्सोल्युटली डॉग शिट, वी वर जस्ट चेजिंग द गेम, वी वर जस्ट रनिंग आफ्टर द बॉल एंड बॉल रिकवरी रेट बहुत खराब था. The only positive from the first half was Diogo Leon. He looked like a player जो बॉल पे बेटर है एंड डिफेंसिवली जैसा उसका बॉडी बिल्ट है, ही कैन बी बेटर. सेकंड हाफ में देयर वर मल्टीपल पॉजिटिव्स, जैसे कि डोरगू लुक्ड वेरी सॉलिड इन द सेकंड हाफ. Oh, आई good, लव्ड good. वॉच डोरगू. उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फॉर मी Come on, आई Tom Eaton, yeah. Tom Eaton, shout मैं आ out. रहा हूँ, टॉम ईटन वाज ब्रिलियंट. एंड मैं एक सही बोलूं तो उनाना को 10 जन्म लग जाएंगे टॉम ईटन जैसे रिफ्लेक्सेस दिखाने में. ऑनेस्टली सेइंग दिस, नथिंग मतलब एक बहुत ही एजेंडा ड्रिवन नहीं है ये. दिस इज द रियलिटी. जिन्होंने मैच देखा उनको पता है भाई, टॉम ईट वी कुड हैव कंसीडर्ड ट्वाइस. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ टॉम ईटन्स रिफ्लेक्सेस के वहां पर हमने नहीं किया, बिकॉज रमाजानी वाला शॉट वो पक्का अंदर जा रहा था. और एक आई डोंट नो वो क्या नाम था उसका, जो राइट फ्लैंक से आया था एंड टॉम ईटन ने क्लोज कर दिया था एंगल उसके लिए नियर पोस्ट पे, इसलिए वो सेव हो गया था शॉट. बट अदर देन दैट आई थिंक मिडफील्ड तो जैसे रूबन एमरिम ने खुद कॉल आउट किया दैट मिडफील्ड हैज टू इंप्रूव. We lack pace in midfield. But again, question needs to be asked from Ruben Amorim. Thank What you. I is was he? I was getting the why is he putting Collier in front and Bruno behind him? I was so मतलब confused. exactly that. We committed the same mistake last season as well. We played Kobe Meno up front and dropped Bruno in the pivot role. I don't understand. Why you are the manager. You have to take responsibility. You have to be accountable for all these mistakes. And these are the immature mistakes. A manager of Amarim's caliber and a manager who's managing Manchester United should not be committing. But these things are happening repeatedly. यूरोपा लीग फाइनल में भी आपने सेम मिस्टेक की, ड्यू टू विच वी लॉस्ट द यूरोपा लीग फाइनल. तो भाई देखो, आई एम ऑल इन फॉर रूबन एमरिम की चटुकारिता एंड बाकी चीजें, बट व्हेन ही इज रॉन्ग ही नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. आज रूबन एमरिम की गलती थी. व्हाई डिड ही पुट कॉलियर अप अहेड ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस? आई डोंट अंडरस्टैंड. आई एब्सोल्युटली डोंट गेट अ मतलब डोंट हैव एनी आइडिया कि वो डिसीजन कैसे आया, क्यों आया. बिकॉज ब्रूनो को अगर आप पीछे खिला रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग ब्रूनो देन? मेक्स नो सेंस. वो भी कैसेमीरो के अलोंगसाइड भाई, जो हु कैन नॉट कवर द ग्राउंड, तो ब्रूनो को एक्स्ट्रा ड्यूटी निभानी पड़ रही थी टू कवर अप द स्पेसेस फॉर कैसेमीरो एज वेल. And Ranjan, thank you so much for the contribution. No club will give the chances United gave to Rashford. I do agree, bro. We were run very badly, and that's why we kept on giving chances to Marcus Rashford. We kept on improving his contract, which we shouldn't have. But then again, that's how life is at Manchester United. Manav, good to see you, bro. After a very long time, you're here on the channel. Tactically, he'll be a good fit since Balde is an overlapping fullback. Given Rafinha could be played centrally at times, Pedri can also find him on counters when done right. देखो भाई, Barcelona will have two very good early runners. First one is Rafinha, who makes insane आपके in behind runs, and the second one who thrives under these situations, early runs पे, early passes पे, is Marcus Rashford. पूरा एक tactical breakdown है आपके Mourinho का while he was managing यहाँ पर आपकी Spurs को, where he said कि भाई Pogba will release Marcus Rashford, and पूरा उसने मैच में बताया भी था. तो definitely यहाँ पर भाई Marcus Rashford can thrive. And AD Howe कह रहे हैं यहाँ पर I had discussions with him, but that's abnormal. I respect a player's career and how short it is. It sounds like his head has been fully turned.
Wait, 1 minute. So does that mean he's going to Al Hilal or he's going to Liverpool? Which one does that mean? हाँ मतलब he could be tempted with the offer Al Hilal is presenting to him because it's crazy money. But also he could be tempted by the opportunity given by Liverpool to win another league title, the first league title of his career. So anything is मतलब देखो this deal is open. तो कुछ भी हो सकता है. बाकी let's see. मार्करन कह रहे हैं यहाँ पे Bruno should be the last player that we should sell. Not only he's our captain, leader, he is the sole reason why we are still in the Premier League. हाँ मतलब he is what De Gea was to us when we were struggling pretty badly. De Gea kept us in the Premier League. See, I don't hate David De Gea. I love him to bits. No, I But know, dude. I love. When I yeah, hear his voice, the warm. My heart but, gets warm, but dude. it's reality. It's reality. Yeah, of मतलब if it course, wasn't for 100%. Bruno, we might have been relegated. भाई last season में जितने खराब थे हम, you take out Bruno out of the team and United would have been in position of Ipswich. बल्कि Ipswich ने तो फिर भी better football खेली थी, हम तो वो भी नहीं खेल रहे थे. Every Ipswich were does. brave against teams. बट Every does, लिवरपूल didn't they? साइन एकेतिके नहीं, लिवरपूल ने साइन नहीं किया अभी तक एकेतिके को. दैट डील इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड. तो शायद लिवरपूल अपना अप्रोच रोक दे एकेतिके के लिए एंड दे माइट गो आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक. एंड क्या कह रहा है मानस कह रहा है यहाँ पर, हेलो भाई लोग, हाउस लाइफ फीलिंग आफ्टर साइनिंग बाबा. आई होप बाबा डिलीवर्स. आई होप द बॉल्ड guy delivers for us. And as a Barca fan, I don't see Rashford going into the starting 11 right away. He starts matches, but he will be a rotational squad player. Okay. But Ferran is injured, na, if I'm not wrong. Ferran is injured right now. So Rashford will get the initial opportunities at the club if I'm not wrong. मतलब preseason tour पे तो he will be there. भैया लेकिन don't you think Amram, Garna and Rashi के केस में ज्यादा ही ओवर गया and didn't do the same thing with Onana and Luke Shaw? यार ये तो हमने कल बोला ही था ना, ये तो हमने कल डिस्कस And ही किया Mason था. Mount, Mason Mount, Mason Mount. He has been very protective of Mason Mount, by the way. He has been very, very, very protective. इस पर हम बात अभी कर चुके हैं यार. देखो क्या है, नंबर 10 तो ब्रूनो अगर नहीं खेल रहा है, ऑब्वियसली बात है हम नहीं अच्छा कर पाएंगे. आई थिंक एम्बुएमो को हमें नंबर 9 या कूनिया में से किसी एक को नंबर 9 डालना पड़ेगा. आज भी Rasmus Højlund was very frustrating. I don't see Rasmus Højlund improving one bit. I don't see him improving. I don't see him scoring goals because देखो क्या पॉइंट है कि एक प्लेयर अगर गोल स्कोर नहीं भी कर रहा है तो भी यहाँ पर अगर लेट्स से कि वो वर्क रेट दे रहा है, वो यहाँ पर स्पेसेस क्रिएट कर रहा है, तो भी बात है. बट हॉयलैंड डज नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड दिस इज नॉट अबाउट him being underconfident. This is about the quality of a player that he holds. So I don't see what can we expect Okay, from. so can I ask you Yeah. simple question, right? Do you think it's another case where we just don't have the ability to develop players anymore? Because if Hoyland of all players do well somewhere else, I mean, Obvious, it's going to be really obvious, bad. obviously, bro, obviously, we don't have the ability to develop players. That's true. So don't you think we should, all these 500 people we sacked, don't you think we should hire someone who can actually help with that in particular? Like, and with transfers, because apparently we need everybody to do one transfer at a time. We sacked 500 people. Can we get like 2, 3 people to like develop players, maybe do some more transfers separately? Like, when people said we are saving a lot of money, these cost cutting necessary, but no one realizes that there is 4 people making the transfer decision and they do one transfer at a time, which is crazy. 4:1 ratio is a terrible ratio to do any kind of business. Mm-hmm. The every year we go, Manchester United does not develop talent, yet City does it, Chelsea does it, Arsenal do it. Like, we used to do it way before these teams, and apparently now we don't do it. I don't know why we think we are too good to do it anymore. There's no evidence to prove that. Can we get some people to actually improve our players, or like what's happening? We just sell everyone does well somewhere else, then we go, it's the league, they can't develop in. Manchester United has too much pressure if you're a player. Bro, it doesn't matter. Football's football. Bro, If you we are can not play, a you can serious club. play. Let's be honest. Yeah. Before saying that, we matlab, players don't perform well for us. For that, you need to put pressure on players as well. For that, you need to be a serious club, and we are not a serious club. I hope we've become a serious club from here. But right now, if you ask me, we are not a serious club. And Shakti is saying we gave 12 million salary to Rashford
and if performed well and raise his value, I think it's a good deal for both parties. Shakti, honestly, we might not get the best possible deal that we hope from Marcus Rashford, because we have already made it pretty clear that हम उसको रोकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए. एंड बारसा अगर उसको खरीदती भी है तो उन्होंने क्लॉज डाला हुआ है कि 35 मिलियन में वो खरीद सकते हैं. तो इट्स नॉट अ डील इतने अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो हम लेना चाहेंगे. वी वुड एक्सपेक्ट कि हम कम से कम 50 मिलियन 55 मिलियन की डील निकालें रैशफोर्ड सिचुएशन से, विच आई डोंट सी हैपनिंग, बिकॉज अगेन अगर आपने क्लॉज डाल ही दिया है उसके केस में तो फिर दैट इज द बेस्ट यू आर गोइंग टू गेट, राइट. अगर वो अच्छा कर जाएगा तो बारसा ही उसको खरीद लेगी ना, कोई और क्यों खरीदेगा, राइट. But it is what it is. And Rahul, thank you so much for the contribution. I'm not bitter, but Ten Hag 5-1 loss makes me happy. Even it makes me happy as well, brother. It makes me happy as well because people were like, Ten Hag के साथ गलत हुआ है, Ten Hag ने ये कर दिया, वो कर दिया, Ten Hag ने ये किया, वो किया. No, bro. The guy was highly delusional with his statements. He got bamboozled against under-20s. ब्राजील की अंडर-20 टीम, वो फ्लेमिनेसी से आ रहे हैं, पल्मेरेस से आ रहे हैं, जिससे भी हारे हैं भाई. अंडर-20 फ्लेमिंगो से आ रहे हैं, अंडर-20 टीम से आ रहे हैं भाई. 5 गोल मारे उन्होंने. एंड इफ ही वांट्स टू टेक हिज वो क्या कहते हैं, सौतेले बेटे या जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, नाजायज औलादें, ओनाना एंड अदर प्लेयर्स, he can happily take those players from us. Would like to see the pair of Mount and Ugarte preferred in the pivot. It's a good mix of ball winning and progression. Bruno can drop in mid build up like Ritz at Leverkusen, but he has to play final third. He has to play final third, Manav. That's what we were demanding. कि भाई ब्रूनो को जितना डीप खिलाओगे उतना बकवास है, कोई पॉइंट ही नहीं उस चीज का. मृदुल कह रहे हैं मोहक भाई मेरे साले ने दिल्ली में चाय हाउस खोला है. मृदुल, यू मैरिड? यू डोंट लाइक भाई कि यू आर मैरिड भाई. आप 22-23 साल के लग रहे हो मुझे इस फोटो में. वो बात अलग है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को साला बोल रहे हो तो बात अलग है भाई. बट मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ही रिबन कटिंग हुई है, आना आप कभी. तो भाई एड्रेस बताओ दिल्ली में कहाँ आना है, आ जाएंगे शुगर फ्री चाय पीने डेफिनेटली, और ले आएंगे लॉन्डो को, थोड़ा प्रमोशन कर देंगे आपका. कनिश, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन. व्हाट्स रॉन्ग विद जैक्सन? ही कैन बी नेक्स्ट रूड. क्या कैंपस या कनिश का ट्रोलिंग अस नाउ. कनिश में थप्पड़ मार दूंगा कसम से. मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं थप्पड़ मार दूंगा. ये जो बकचोदी लगा रखी है ना, ये रोज आके एक I miss Kanishka. I was just going to say that I miss Kanishka's lovely comments. ये रोज भाई 34 का हूं. नो वे ब्रो, यू डोंट लुक लाइक 34. या तो ये 10 साल पहले की फोटो है. You don't look like 34. Does he look like 34? Whatever you're drinking, spare us some bottles, please. No, I don't want that drink. मैं already में लगा. No, whatever it could be spring water, यार. I don't know what he's drinking. नहीं, but Chad needs it. I don't need it. मैं अभी भी सही हूँ. मैं नहीं लूँगा. I'll take it. Okay. BG is saying यहाँ पर if we now brings a striker, it will be my head loss on what we need is a midfielder in double pivot. If striker comes, decline of Bruno will start an Amorim too. Ooh. Are you that certain? Are you that certain? It's looking like that, man. If he plays next to Casemiro, especially. See, if he plays like next to Casemiro, for sure Bruno will burn out. For sure Bruno will burn out and Bruno won't put up the numbers that he's expected to. But at the same time, I think यार even Ruben Amorim understands. And देखो क्या है ना, हमने दोनों हाफ में एंटायरली डिफरेंट टीम उतारी है. एक हाफ में हमने कैसेमीरो के साथ हमने कॉलियर उतार दिया और ब्रूनो उतार दिया. दूसरे हाफ में हमने उगारते भी उतारा, माउंट भी उतारा, कोबी भी उतारा. तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन जब सेटल होंगे और आपकी रेगुलर मिडफील्ड बनेगी तो कहीं ना कहीं आप इसमें चेंजेस होते देखोगे, राइट. आई डोंट थिंक यहाँ पर ये हमारी फाइनल लाइनअप है और आई डोंट थिंक ये एमरम इतना चूतिया है, ऑल्दो वो लगता है कभी कभी बहुत चूतिया है, बट आई डोंट थिंक एमरम इतना चूतिया है कि वो यहाँ पे ब्रूनो को इतना डीप खिला देगा. बट यस, ही इज मेकिंग सम ब्लंडर्स. If United is not getting the best out of their superstar players and their new signings, it's Amorim's responsibility and Amorim should be blamed for it, for sure. That is the only statement I made at the big end of last season. Everyone has to be accountable. You know, someone actually, I think Frozen was saying, how do you expect him to do well? We were 15 last year. I'm like, bro, what is 15 got to do with sorting your players out in formation?
Nothing. But that is in the past na yaar. Matlab, if No, you no, no. don't He's even talking about today. Na, we were talking about today. I'm saying, what is it about? What is that got to do with them? Sorting the players out in their right position they has got nothing to do with signings, no? they got one entire month to relax and to basically get their fitness back on track, to get their energy back. Luke Shaw's looking good, huh? I have to say. Surprisingly. Nathan, Surprisingly. I said surprising. I'm surprised. don't count. Don't count on him. Don't count on him. Don't count on him. Come on, Mohak. Where is the positivity? Look. Get inspiration. Come on. It Bro, used to be him. This was the guy. don't. I loved him when he joined us from Southampton. I even loved him when he came back from the injury. But वो बंदा वही है, रैशफोर्ड वाला एटीट्यूड है. Everybody know that he has the ability to be the best left back in the league. बट वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी. ही इज नॉट कंसिस्टेंट. तो मैं नहीं बोलूंगा यार, मैं लूक शॉ को लेकर कुछ होप हाई रखूंगा ही नहीं. एंड Yes. राहुल इससे यहाँ पर एक घपला किया टेनहैग ने. एसईजी और गोलब्रिज ने मिलकर जब हॉयलैंड की इलीगल एंट्री हुई थी, आई कांट सपोर्ट दैट पर्ची. एरिक टेनहैग रिजेक्टेड ईसाक एथलेटिक. यार मुझे लग रहा है वो एथलेटिक वाली रिपोर्ट मैंने क्यों नहीं पढ़ी है कहीं. वो कहाँ आया है आजकल. Eric Ten Hag rejected Isaac. I don't believe this. I don't believe this. And if he has rejected, bhai, I wish him to get the sack this year as well. अगर ये सच है तो. Criminal, yaar. What a But I criminal. don't. Like, But unbelievable. but I don't think वो सच है भाई. I think it's fake because एथलेटिक का मतलब मेरे पास वो है, सब्सक्रिप्शन भी है, एंड मैंने उनकी नोटिफिकेशंस ऑन कर रखी है. मेरे पास तो नहीं आया कहीं से. फेक है, सब वही कह रहे हैं फेक है. हाँ नहीं भाई, वो सच नहीं है यार. मेरे साथ तो सच नहीं हो सकता भाई. देखो कितना भी चूतिया हो मैनेजर, बट वो इतना चूतिया नहीं है कि वो मना कर दे ईसैक को. ये देखो कनिष्क कह रहा है माउंट और जॉर्ज बेस्ट, शॉ और कार्लोस. शॉवर्टो कार्लोस तो बोल सकते हैं, ठीक है. ही वाज दैट गुड उस टाइम पीरियड में. क्योंकि उसको रॉबर्टो कार्लोस ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया था. Yeah. बट यहाँ पर माउंट और जॉर्ज बेस्ट में आई हैव टू गो विद मेसन माउंट ऑब्वियसली. Obviously. ऑब्वियसली Obviously. मेसन. देयर इज नो, नॉट इवन अ डिबेट भाई. नॉट इवन अ डिबेट. क्योंकि आई एम वॉचिंग मेसन माउंट, आई हैवंट वॉच्ड जॉर्ज बेस्ट. तो ऑब्वियसली आई हैव टू पिक मेसन माउंट. दैट बिकम्स प्रीटी ऑब्वियस. कितना इजी मैनिपुलेट करना है यूनाइटेड फैंस को आज दिख गया मुझे. हाँ मतलब यार देखो, बात ये है कि फ्रस्ट्रेटेड फैन बेस है. अभी क्या है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए कोप अप करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ चाहिए दिलासा देने के लिए अपने आप को कि भाई ये नहीं हुआ इसलिए हम इस सिचुएशन में, वो नहीं हुआ इसलिए हम इस सिचुएशन में. तो अगर यहाँ पर कोई प्रिंट मीडिया ये प्रिंट कर दे कि भाई टेन हैग ने रिजेक्ट कर दिया ईसाक को या वैसा वैसा, वो बिलीव कर लेंगे क्योंकि वो इतने डेस्परेट है इस चीज को लेकर. तो नॉट ब्लेमिंग देम, बिकॉज हम भी कभी ना कभी ऐसे फंस ही जाते हैं. मैनेजर का चूतिया होना अलग है, एरिक टेन हैग होना अलग है, वो तो सही बात है. स्ट्रीम पे बकचोदी ही हमें अब खुशी देती है, यूनाइटेड का प्लेइंग का तो पता नहीं. हाँ चलो ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द गेम. नेथन, any positive that you took tonight's game? So, from the first half, Cunha, I thought he moved in tight spaces and he was very aggressive. I found it a little worrisome that he was going after Obi, which I actually like. If he did it to someone else, right? There was that open chance that Obi should have left. He Yeah, lined up perfectly for Cunha. He yeah. took it out on Obi, and I was like, part of me is like, dude, don't scream at a 17-year-old. But part of me is like, we need this now. It's gotten to the point where we have to scream at 17-year-olds. Hmm, Like we need it. It's a matter of momentum now every match. hmm. So I was very happy with Cunha. Bro, he looked so hungry. Yeah. On the ball, he looked so hungry, fighting, trying to trick people, link ups, trying to do cute passes, speed. For once, we have some speed in the final third. Yeah. Um, I like that. Diego Leon looked very raw to me. I'm very nervous about how the South Americans play in our league. Yeah, they are so used to playing rough football that in our woke league, it's very dangerous. He was very physical today. I loved it. He's extremely raw, which is great. Very promising. I loved his interview. Yeah, in the airport, he's like, "I don't plan on going on loan." I was like, finally, my most favorite interview of 2025 was a 17-year-old Paraguayan kid at the airport. That's how bad our media has been for 2025. I love the confidence. He's like,
let's see, looking forward to it, can't wait to see the lights. He's like, screw all that. I'm not going on loan. I'm here to play. I was like, Hmm. come on, let's go, boy. This is what I'm talking about. Sorry, Ari Amos. Big fan, but no luck for you this year. But first half, this second half, I thought we were much more frenetic. I thought we attacked much more. People are about to get really shocked here. I thought Patrick Dogu was absolutely immense today. I mean, I know it's a friendly, but he was immense in the Europa League final as well. So I love the momentum he's carrying on with from last season. He A was big, great. a big statement coming from somebody who. No, listen. Listen. I'm not afraid to say they do well. Yeah, if they do Hmm, well, they do well. I don't have to like them. I don't have to. It's not yeah, necessary for me. Patrick yeah. Dogu was great. And I want to say something nice about Hoyland, bro. If he got that header from that Diego Dalot cross, I was just thinking about. I'm like, did you see that header though? If that header Yeah, was so difficult to do, if he scored that yeah. header, I'd be like, bro, keep cutting your hair. Keep go every week to get your hair cut, please. Like every week you go and get this haircut. I Patrick Dogu for me. Yeah. And watching Evan and Euro on the ball. Oh, I Heaven can't looks wait. so Yeah. confident. Heaven looks so So confident. confident. And इसीलिए Heaton, yeah. मैंने कल Shout out बोला to भी था Tom कि Heaton. oh my god, Hmm. man, Tom Heaton was Amen. superb. Bro, you saw how he was That was smiling the after version of Menaces? Tom Heaton who used to play against us. Remember when he was at Burnley and Villa? Bro, this is the one that only didn't get into the England squad Yeah, because they said he was too old. yeah, He was that good a goalkeeper one season yep, when they qualified for Europe, first and yep, only yep, ever yep, time Burnley did. Dude, yep. you saw when he made the save, he was like, I was like, oh, what is going on here, dude? Look at that smile. I was like, yes. Tom But Heaton you was see that absolutely. that is the real difference between high level though. His whole life he has played at a certain level. United, And he Burnley, hasn't whatever, played Premier for League. two, and he hasn't played for 3 seasons. He He looks so hasn't played for great. Yeah, 3 seasons. just playing out of nowhere, looking that good is shocking. Yeah, I was surprised, so वो कहते surprised. हैं ना कि वो कहते हैं ना कि भाई form temporary, class permanent. Class So permanent, absolutely. he's that And guy. the first person I think of when I hear that statement is Rahul Dravid. I don't know Oh my. why. I always think of him when I hear that sentence. मेरे दिमाग में दादा आते हैं मतलब Yeah, form temporary, class permanent, because he was always a class player. For me, I personally, he's the favorite 100%. captain that has. मतलब he has been the part of my journey as a cricket fan. He was the I first agree. captain. He was my first captain जब मैंने देखना शुरू किया था. धवल सिंह फरहान को अपेंडिक्स हो गया था. He's fully back. Okay. Yeah, Ascender what is Gray that? गया. 3 4 weeks, right? Surgery. He'll be Yeah. back by the season start. He'll be back. यमाल की Almost. पार्टी की न्यूज देखी भाई. यमाल की तो पार्टी की न्यूज देख रहा हूं मैं आजकल. उसके अलावा और कुछ देख नहीं रहा हूं. यमाल के बारे में सिर्फ पार्टी और लड़कियों के बारे में ही पढ़ने को मिल रहा है. आई होप बारसा हैंडल्स दिस वेल एंड यमाल का जो करियर मीडिया और यमाल खुद बर्बाद कर सकता है. दे टेक कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ. Kanishk is saying Eltonic did reject Carreras when you didn't have left back. 100%. I I've will explained this in detail on this channel. I will never forgive him for that. Will never forgive him for that. He's मतलब मैं क्या बोलूं यार. Mobro don't know about Pedro or Vitinha. This team lacks a Caicedo. Rice even our team don't have a single pivot midfielder that can run the show by himself. I don't think you We can could have, play this we could have, formation and run it by yourself anyway. we I could don't have think signed you can. Paul Pogba, by the way. We could have signed Paul Pogba. No, 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 no. This is my Garnacho, dude. This is my Garnacho. No, absolutely no, dude. Absolutely not. Every time he went to France, oh, I love playing for France. It's such a play. Hmm. Shut up, dude. That's because Matuidi and Kante are doing all your dirty work. That's why you love playing for France. Vishal is saying want to see Euro play and Cunha and Mbemo. Euro though will definitely play. Euro is going in the starting 11 for sure, bro. See, Maguire थोड़ा सा मुझे आज वो लगा मतलब Oh, did नहीं he get फिट था injured? उतना ज़्यादा. My I don't heart know. sank. Yeah, my heart sank when he walked Fredrickson, off after 20 minutes. I was like, come yes, on, yeah, we can't. Fredrickson was called in when he was substituted. So I don't know. I don't know. Thoughts on Fredrickson? Yeah, he got a number upgrade, which I think is quite promising personally. That's how normally football numbers work in general. I saw the upgrade number he got from 56 to 30. I But was he, like, this is nice. but he will be sent out on loan here. मतलब let's be real. But you know what? I actually like the kid. I think he's quite okay. He's good. He's good. He's good.
last season as well when he got the opportunity in the, I think it was the cup game if I'm not wrong, he did quite well. So I've got Is zero. Bennett and Fish sold? Reese Bennett is someone we should have given a chance to. FA Cup captain. Yeah. Should have at least given him a chance. Yeah. By the way, Cup captain. Ramazani, the lad was at United. Oh. We got rid of him. Ramazani was good for Leeds, and last year he was playing for La Liga side. I don't remember the side exactly. कौन सी थी, and he was doing great there as well. जो भी उसकी टीम थी, Ramazani was such a promising player. People were rating him so high. मैंने academy के coaches के statements पढ़े थे, and they said that he could be the next big thing. Almeria, yes, he was playing for Almeria. Yes, yes, Almeria. yes. He was playing for. Yugadi is saying not injured. Lovely. Who said he's not? Nathan Salt has said he's not injured. Okay. Relief. Mob bhai, if Absolute Merit relief. sell Garnacho and Sancho, combined fee of 50 to 60 million, I will get 35 million Emi Martinez and 15 million ka Remensa and then sell Onana. Remains Remains. and then Salona. Okay. अच्छा ए अलग है. Yeah, Okay. yeah. Switch. उसने गलती से लिख दिया. Remains and Then sell then Onana sell for 12. Onana 12. So in 27 million I will get a DM. Oh, Also Victor. Pau Victor. Pau Victor क्यों लाना भाई? We need a better striker ना. Pau Victor is a decent striker but he's also a prospect. We need a prepared striker भाई. अब हम वापस से यंग स्ट्राइकर पे गैम्बल खेलें, फिर हम छाती पीटे अपनी कह रहे यार गोल्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे. तो नहीं ब्रो, आई थिंक वी नीड एक्सपीरियंस स्ट्राइकर. What I feel is we might go seriously after Ollie Watkins. I don't think we'll go after Sesko because we don't have the money. What I feel is we'll go after Ollie Watkins. I can feel it. I can feel it that we will go after Ollie Watkins. वेस्ली रोमा जा रहा है. मिस्टिक इंसान ब्रो. कौन वेस्ली? अच्छा वो वाला वेस्ली ब्राजीलियन. ब्रायन एंड कोनिया मैजिक हैपेंस. अरे अभी उतरने तो दो यार. पर 27 मिलियन में यू कांट गेट अ बेटर स्ट्राइकर देन पाव विक्टर. तो 27 मिलियन ही थोड़ी खर्च करेंगे यार. पैसा तो और भी डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है. गर्नाचो बिकेगा, सेंचो बिकेगा, एंटनी बिकेगा, तो ये प्लेयर्स बिकेंगे. प्लस आपकी वेजेस फ्री हुए हैं. आपके 2 प्लेयर गए हैं परमानेंट बेसिस पे, एक गया है लोन पे जिसका आपको कुछ नहीं देना है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके वो वेजेस भी यूजफुल होंगे. प्लस अगर आप एक आधा और सेल कर देते हो प्लेयर अपने अकेडमी का, प्लस अपने फर्स्ट टीम से लेट्स से कोई अच्छा ऑफर आ जाता है किसी प्लेयर के लिए, इफ यू ऑफलोड हिम देन यस जैक्सन ले लो. देखो जैक्सन में ले लूंगा अगर मुझे 25-30 मिलियन मिल रहा होगा जैक्सन. अगर 25-30 मिलियन दे रहे हो जैक्सन दे दो. बट इफ योर क्लब चेल्सी रेट्स हिम एट 50-60 मिलियन, भैया अपने पास रखो, हम तो नहीं ले पाएंगे. और अगर यूनाइटेड लेती है तो हमसे चूतिया बोर्ड कोई और नहीं होगा. सीरियसली भाई. हैरी अमास is going out on loan, by the way. To anyone who's saying and expecting to include Harry Amas in the preseason, he's already off to Rotterdam. How about Cunha, Bruno, Embuemo as front three? I would That's love what it. I've been saying for 1.5 months. I think that's what we I would should do love it. with Wasted. Yeah, love it. I would love it, and I think I absolutely deserve it. Deserve it. But but we are not going to get. We are not going to get that. वो नहीं मिलेगा हमें. जितनी शिद्दत से आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो उतनी शिद्दत से आपकी टीम उसकी ऐसी तैसी फेरने में लग जाती है. I think what's really frustrating is Amram after the match goes, we lack pace in the midfield. I'm like, bro, you picked the midfield. I'm Absolutely. like, You what's pick the happening, midfield. dude? It's so weird. Yeah. You pick the midfield. The statements only get so bad after some time. Yeah. It's like, okay, dude, we knew for 2 years our midfield had a hole in it. Welcome to Manchester United. Thank you. यार प्रॉब्लम यही कि हम अपनी टीम मतलब अपने प्लेयर्स का लोन डिसाइड करते टाइम टीम्स नहीं पिक करते हैं सही. वही नेथन बोल भी रहा था दैट वी आर अ cheese and chocolates FC, baby. Yeah. Come Cheese on. and He's not going. He's not going, yeah. He's not going, it seems. Sekou Kone is not going. Yes. No cheese and chocolates, dude. No Lausanne. Thank you. Thank you, Jim. Thank Sekou you. Kone is not going, but Harry Amas is going. Well, क्या करें sometimes मुंबई? you have luck. There are 2 types of academies. One like Barcelona and the other one is like Real Madrid. Barca produce talent but sucks at selling. Real Madrid vice versa. How can United become one of them? How we are already मतलब
A mix of both. Yeah. We are a Don't mix make of enough both. money. Yeah, we don't make enough money and we don't produce good talent. We are a mix of both. We are the we are the worst of both the half. अगर मैं बात करूं दोनों क्लब की तो we have taken the negatives out of both the clubs, not the positives, but have taken the negatives of both the clubs. I think United need a midfielder who can control defensively like Hackney or Baleba. If this happens, mid will look good. Mid will look good. Baleba के लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दूंगा या तू देगा? BG saying who should be the right target? Quality needed. Press resistant. वो तो फिर अभी बलेबा का नाम आया ही था, ऑब्वियस सी बात है. या फिर हम अहमदू उनाना के लिए जा सकते हैं अगर हमें विला से लेकर आना है कोई. उनाना would Swap be him, yaar. Keep Garnacho. Give us Onana, please. Please. could be could be. But do we? But हाँ मतलब it's better to give Garnacho to Aston Villa than to give it to Chelsea, isn't it? Isn't it? Yeah. Better than By the way, Chelsea. Yeah. thoughts on Dalot's performance, Nathan. Fantastic. I thought he was absolutely brilliant. Absolutely brilliant. Our right back is the best. One of Be the honest. cold celebrations. Be honest. Be honest. Be honest. Can कोई I देख be रहा honest? होगा. I'll tell you honestly. You know why I love Dalot more now? Because now I have to do my blood pressure every night. So when I do it, no, I think I also go like this. Yeah, come on, low, Uh, keep it low. Um, भाई Dalot was horrendous मेरे लिए तो. Dalot, he's very poor. He's bang average. He's I good in certain areas. He's good in certain I areas, जैसे कि Yeah, touches and I all. have But to. But the thing is, no, this is the problem, Mark. It's like you cannot make a man who's been a right back his whole career right wing back. This is why Mazraoui is also playing center back. Like I'm not even disagreeing with everyone here. It's not about whether he's good or not. It's about player profile. Everyone like Yugadi is saying we need a ball carrying midfield. That's why Bruno's playing the middle. But bro, the rest of the team suffers because Bruno is out of position. He has to clean up everyone's mess. Then he's out of position. Then he cannot affect the attack. Then everything is disconnected. The same way, if Dallo, his whole career is a right back. See, this is the thing I like about certain players of ours. No, whether they're good enough or not, no, they're professional and they'll give it their best. Yeah, even if they're limited. This is also why I like Anthony. This is also why I like Dallo. Dallo has been put in a very difficult position. Let me put it in another way. Tomorrow, if Amar Diallo has to play right wing back for the whole year. No, he is also going to struggle. But we will not say he's a crap footballer because we have seen the magic. We have seen it, so we know he's not crap. But he I will haven't be seen the crap at magic. right wing back. But He I will haven't be. seen the magic from Dalot. Na? That's the Dallo, point. I've seen, yeah, at Brentford. Come on, yeah, come on. You can't just forget all this Come magic, on, dude. Come yaar. on. Come on, yaar. Let's be No, but real. my okay, but what is the actual alternative? We know Mazraoui is going to be worse than But him I at go, right wing back. should go for Dumfries, I would say, if you want to bring Dumfries, in but somebody bro, who these is are capable enough bargain of playing basement. right wing back. Bargain basement prices. Now, if they tell us we don't have 20 million pounds, no, then the Rashford loan makes even less sense. For 20 million pounds, even if we don't have money to buy players with a buyout clause, we might as well no just go into the new season without buying anybody. It makes no sense. Everyone talks about money. These people are getting sold for 20 million. So what? How much less of a price do you want such a quality player? You will not get anything less. Ibrahima Konate does not want to sign a new contract because he wants to One go. more time. Yeah, No please one one is more going time. to pay 40 million for Ibrahima Konate on his last year in his season. Yeah, we are getting Denzel Dumfries 2 out of 3 UCL finals, probably the best player in Inter Milan for 20 million pounds. Bro, it is some things. No, some things are just common sense. It's not about good business, bad business. If we need a right back, no, get a right back that plays right back. Right wing back, sorry. Play right wing back. He's played at Inter Milan with 3 at the back his whole career. Get him. Let me tell you all one thing. Real reality check. No, Even Walker Peters is better than Dalot.
Bro, I'm telling you right now. No, I'm telling you right now. You put Ahmad there, he's going to do worse. You put Mazraoui, someone we like, no, and he's also only played right back his whole career. No, he'll do worse than Dalot. Mark my words. But Nathan, Dalot was always an advanced right back, na? Yeah, He was not a proper right back. He was always yeah, एक advanced right back. तो एक right wing back position में Dalot should be taking more responsibility and थोड़ा sure. और better खेलना चाहिए. Again, Yeah, fair when we talk enough. about certain players, ना, we tend to have एक soft tone while talking about them. Yeah. I mean, I'm not denying कि हम ब्रूनो के बारे में भी जब बात करते हैं, हमारी tone soft हो जाती है because obviously of the output that he has delivered. बट डेलो के केस में वो चीज तो है ही नहीं ना. तो हम यहाँ पर डेलो के लिए इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों होते हैं? डेलो की सेलिब्रेशन बहुत एपिक है, आई एग्री. बट सी, डेलो इज नॉट अमंग द टॉप 5 राइट बैक्स. No, ही इज नॉट. no, no, इज ही? he's not. ही इज No, नॉट. no, he's not. He's not. He's not. ही इज No. नॉट, राइट? ही इज नॉट. तो व्हाई डू वी हैव टू कीप ऑन, मतलब प्रोटेक्ट अ प्लेयर जो लिटरली नहीं है उस लेवल का, जिस लेवल का हम बनाने की कोशिश करते हैं उसको, प्रेजेंट हम जिस तरीके से करते हैं. And Kules OP, So thank you so much for the contribution. There was a rumor week ago that United had plans to sign Mbemo on deadline day, so they aren't required to pay his 2 months salary, but somehow they have arranged funds for his salary, so they signed right now. नहीं नहीं, there were no reports regarding this, bro. Literally, there were no reports. अगर आप sarcastic हो रहे तो बात अलग है, but नहीं, there was zero reports regarding this. United always wanted to get Mbemo before the preseason tour, and that's what we have done. We have just delayed the deal by 15 days. अगर हमें इतना ही देना था तो हम 15 दिन पहले भी डील रैप अप कर सकते थे. बट इट ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द वीसा वाला जो भी अप्रोच था फ्रॉम द न्यू कासल और दूसरे उससे था जो भी था. बट इफ इट सार्केज्म तो बात अलग है. बट यस, टॉकिंग अबाउट डेलो वंस अगेन, नेथन, why we have such a soft tone while talking about Diego Dalot? I think the answer is really simple, and I think the answer actually stems from Cristiano Ronaldo's interview, not the Piers Morgan one. I think before that, That he is where the only he player who wants to work hard. who is a professional, who is serious about this. He's not caught up in the glitz and glamour about of being a Manchester United player. And I Hmm. think a lot of the fan base has seen what those players do, which always ends up negatively. And I think we are trying to protect the people who keep the locker room in a healthy manner. Hmm. This could Hmm. be absolutely a hot take, it could absolutely be false. But I am 100% sure he is part of the core factor left that keeps this, tries to keep as many people as possible professional. I really think that is the reason. And I also think he's the only one who actually can play both flanks, like with relatively ease. So I think he becomes more useful that way. And I have a feeling that if Mazraoui plays in his position, it's going to get even worse. So you can even argue that there is no alternate option. Uh, I think we can only sell Dallo if we go for Dumfries. Otherwise, there is no point because you can't. You the only nice thing about our club now is we are getting rid of the bad eggs, and I think we have to continue to get rid of the bad eggs until they're gone. And we need positivity around the young, especially now that we have, I think, even more young players in the starting squad. I think we have to protect the good apples. I think it's very necessary. I think it is. And I'm very glad we extended Tom Heaton because I think Tom Heaton, oddly enough, I've heard in many interviews, like player interviews with third party interviewers and YouTube channels, that everyone talks very highly of Tom Heaton. So I'm not even surprised we have extended him for another year. I think we're really trying to get rid of a certain um, bunch of people, and people will think it's not important, but I think at this point of time in our club, it's very important. I think last year proved with how many really negative forces in our club all in one locker room. I think it's proven to be very important that we get rid of them. And someone told me, can't believe Nathan's a Dalosexual. Listen, man, I'm telling you what Ronaldo said it, dude. That you might as well call Ronaldo a Dalosexual too. You might as well call him that because he said it before any of us even figured it out. You might as well call him one as well. Fair enough. If that makes me one, I'll I take don't it, know dude. I'll about take it. Ronaldo being a Dalot sexual, but Dalot is for sure a Ronaldo sexual because भाई Oh, रोनाल्डो मतलब डेलो का बस नहीं चलता, वरना तो शादी ही कर ले रोनाल्डो से. एंड व्हाई नॉट, ऑब्वियसly.
Obviously, Niloy very is saying, handsome. thank you so much, Niloy. Niloy is saying, भाई if I'm not wrong, 2019 में PSG आया था मार्कस के लिए, हमने नहीं बेचा, आराम से 60-70 मिलियन मिल जाते। भाई हमें उस टाइम पे 80 भी मिल जाते, क्योंकि रैशफोर्ड का उस टाइम पे फॉर्म बहुत सॉलिड था, एंड अगर हम बेचना चाहते तो हम शायद उस टाइम पे बेच देते। और 2019 छोड़ो, 2022 में भी रैशफोर्ड वाज इन डायलॉग विद पीएसजी। they were ready to offer एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू मार्कस रैशफोर्ड, बट यूनाइटेड ने फिर उस टाइम पे उसका ट्रिगर कर दिया था एक एक्सटेंशन, और फिर उसके बाद हमने उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एंड आई सेड इट पब्लिकली दैट यूनाइटेड जो अभी गलती कर रही है, दिस विल कम एंड बाइट अस बैक इन द बम, बिकॉज रैशफोर्ड ने जो सोल आपके टेनेक के फर्स्ट सीजन में स्टैट्स डिलीवर किए थे, आई वाज डैम श्योर कि वो उसका 50% भी नहीं करने वाला था। एंड ही प्रूव्ड मी राइट, एब्सोल्युटली राइट। मेरी शर्त भी लगी थी यहाँ पर अचिंत से, एंड अचिंत वाज लाइक नहीं भाई वो करेगा, एंड ही प्रूव्ड मी राइट। तो मतलब बात भाई ये देखो यार कि इट इट इज नॉट अबाउट इंस्टिंक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट कि भाई मेरे इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। आई नो द रियलिटी, हाउ पैशनेट ही वाज एंड हाउ determined he was to fulfill his potential. He was never that passionate, he was never that focused about his days at United. He might be very focused अब जब वो खेलेगा बारसा के लिए, but he was never focused about Manchester United. Kanishk is saying we could get Vasquez for 2 years for free. Fuck off, Kanishk. Fuck off. If you are sending super chats, at least send something good. जब लिख रहा है तो Soumyadeep, thank you so much yaar for the contribution. Barca giving full salary to Rashford, don't know why, but I have a very funny feeling about that. Can't wait for Coolers to turn against him. No, Barcelona is paying his full salary, but at a deducted price. ये भी है. They are not paying him 300k per week. They are paying him gross salary जो है, that is 200k per week. तो 100k per week का वहाँ डिफरेंस है, और जो नेट सैलरी है दैट इज 100k per week इंक्लूडिंग एड-ऑन्स एंड एवरीथिंग, बोनसेस वगैरह, वो रीच करती जाके फिर 200k per week पे। तो डिफरेंस है सौम्यदीप। एंड हाँ मतलब दे माइट टर्न अगेंस्ट मार्कस रैशफोर्ड, बट देन अगेन बात यही है कि ही इज ऑन लोन, दे हैवंट साइंड हिम ऑन अ परमानेंट बेसिस। एंड इंस्टिक्टेड सोल, थैंक यू सो मच यार फॉर द कंट्रीब्यूशन। Mohawk seems passionate and fans still hoping for comeback. While Nathan looks like who's gotten depressed and lost all hope, may he gets peace. अरे भाई कौन सी peace? By the way, Nathan तेरे reports आने थे bro आज, या आज टेस्ट था, रिपोर्ट्स आने No, बाकी हैं? test. Today I went for test. Monday. Oh, Fingers crossed. okay. BG is saying यहाँ पर questions to both of you. Do you think Mbeumo was our necessity or is a luxury signing? I felt a centre back and a mid should be a priority before our attack. And on Dalot debate, Dalot is a very average player. I hope everyone agrees. Mbeumo was a necessity for us. You tell me, goal scorers कौन देख रहे हो आप टीम के अंदर? You are counting Kune as a goal scorer. I am counting Kune as a goal scorer. You're counting Bruno as a goal scorer. I am counting Bruno as a goal scorer. But if you're counting Hoyland as a goal scorer, I'm not counting Hoyland as We a goal scorer. we count Garnacho as a goal scorer, and we want to get rid Yeah. of him, so we have to replace him. And Garnacho, being a goal scorer, scored only 7 goals. So you He know. was second man. Yeah, exactly. Yeah. So you do understand के how short we were when it comes to यहाँ पर आपकी, अच्छा इवान फर्ग्यूसन टू एएस रोमो हो गया है, ओके कूल। इनिशियल लोन है विद एन ऑप्शन टू बाय फॉर 40 million, ओके ठीक 40 है, million. 40 million. He's coming back to Brighton. That means basically. I don't Roma, think Roma doesn't have 40 million here. हाँ मतलब रोमा if they don't qualify for Europe, I don't think they will trigger that 40 million वाला clause. And तो to answer yeah. the defense, the center back thing, BG, we have to see. BG, you have to understand the center backs and the tens. No, we are in the exact same position. Whatever you think about the players, no, whether they're good enough or not, we have too many. So center back to me was never going to happen because we just have too many. Now you can say they are makeshift center backs. They're played out of position. The problem is the other position they're playing in has actually a better player. So their alternate positions are being used, i.e. Mazraoui, i.e. Shaw is the best examples. But even if you take Shaw and Martinez's injuries and Evans and Lindelof off, we still have 4 center backs. Now, obviously, you need 6 center backs. I am just taking their injuries aside. So we have Mazraoui, we have Shaw, we have Martinez.
We have Maguire, we have Heaven, we have Kukonki. I think Kukonki is going to get promoted, by the way. I think Yeah. we have He's not Fredrickson. If he getting doesn't go on, opportunities, he but won't get he's still up. not getting opportunities. Yeah. So what? So basically, what I'm trying to say is we have too many center backs. Now you will say none of them are good. To Hmm. which I would say I agree with you completely. The problem is if we don't sell them, we have too many center backs, so we can't buy another one. Simple as Yeah. that. So Yeah. center backs and tens no made no sense to me. What you are absolutely right in, and I think we all can agree, is we should have gone for a center mid first. Absolutely first. And then we should have taken Onana, put him on a canal in Manchester, and send him to Ghana or wherever he came from. That was the second option. After that. यार देखो, मेरे लिए तो मैं सही बताऊं, आई थिंक Kokonki will get the opportunity. That's true. But matlab, he will be promoted in the first team squad, but I don't think he'll get chances in the first team. स्क्वाड में आएगा, बट और जहां तक बात रही यहाँ पर आपके मिडफील्डर्स वगैरह की, तो हाँ मिडफील्डर में लेके आना पड़ेगा, बट अगर हम मिडफील्डर लेकर आ रहे हैं और अगर हम गोलकीपर फॉर श्योर लेकर आ रहे हैं, फिर वी माइट नॉट साइन सेंटर बैक. आई डोंट सी इट हैपनिंग. तो पता नहीं ब्रो. नेकितेके वाला जो अभी वैवन लिखा है, लिवरपूल पेइंग 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन फॉर नेकितेके, भाई पैसा आ कहां से रहा है लिवरपूल पे? इतना मुझे ये जानना है. ये कोटिन्हो के पैसे से इन्होंने कौन सी खेती लगाई है कि जो इनको पैसा दिए जा रहा है. ये रीजनरेट कहां से हो रहा है पैसा इनका? आई रियली वांट टू नो. बट जो भी है भाई, लिवरपूल इज ऑन अ रोल राइट नाउ. लिवरपूल इज लिटरली गेटिंग एवरीबॉडी जो वो लेकर आना चाहते हैं. एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक ईयर फॉर देम ट्रांसफर बिजनेस वाइज. अब वो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के तौर पे, जब सीजन शुरू होगा देखते हैं. बिटकॉइन में लगा दिए, उन पैसों से बिटकॉइन लिए थे भाई, जो भी लिया था यार. क्रेजी मनी, इजंट इट? कैन यू साइन बोथ? Sorry, can you sign anyone but Amram always win in his second season? I know a guy who does. अरे भाई, Satish bhai is saying thank you so much, Satish bhai, for the contribution. All are searching for center backs. Amram system has 5 defenders, but we don't have option to rotate between those defenders, Satish bhai. We don't have options because 3 of them are injury prone, and if Maguire is injured, जो कि लगा मुझे आज, so it's a big wake up call for the management that you have to get somebody on board, or you have to promote Kukunki and start giving him the opportunity, isn't it? Don't you feel? Overpaid for Ekiteke, ये कह रहा है यहाँ पे. Overpaid for Ekiteke. जो प्रथमेश रॉड्रिगो की फोटो लगा रखी है इसने लिवरपूल जर्सी में. अरे भाई, नो ब्रो. अच्छा, do you feel Rodrigo to Liverpool will happen? All honestly, everybody in the chat. By the way, ये Rodrigo to Barcelona के लिंक्स कहाँ और कौन निकाल के दे रहा है यार? ये इतने चुतियापे वाली न्यूज़ कौन दे रहा है? Rodrigo to Barcelona will happen. भाई ये क्या बकचोदी वाली न्यूज़ है? I feel थोड़ा डिफिकल्ट होगा भाई Rodrigo to Liverpool पुल करना, क्योंकि एकितेके पे अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, देन आपने यहाँ पर फ्लोरिन वर्ड्स पे भी कर दिया, तो इतना पैसा कहां से खर्च करोगे यार? Do you feel? I don't think so, but I honestly, you can't even put anything past Liverpool, honestly. But are they going for? Do you think the Ekitike deal is going closer because the Hal Hilal deal I is don't think. getting done by Isak? I don't know, bro. I don't So know. I think they how is Newcastle lost all their pull? Dude, they were the richest club, what back to pull? back Champions League. What No, pull but exactly? see, look at it. Put it this way, right? They got bought by the rich. Now they are officially the richest owners. Now they are From gone Rex to riches. no, From and Rex. two to and, 2 to 3 seasons they are in now Champions League. Like, Yeah. how are they actually struggling to sign players and losing their best players with Champions League football? That is normally something that happens when you don't have Champions League football. So they're actually losing. They're actually losing the pool, yeah, which is very shocking. अब ये तो मेरे भाई न्यूकासल ही बता सकती है ये कैसे हो रहा है, बट डोंट नो. प्रांजल इज सेइंग यहाँ पे, प्रांजल ने 24 महीने पूरे कर लिए. क्या बात है भाई प्रांजल, पूरे 2 साल. वेयर वर यू बाय द वे भाई, इतने दिन से दिखाई नहीं दिया. पक्का बोल रहा हूं 1 साल बाद रिटर्न कर देगी बार्सिलोना. वो तो हमें भी पता है.
वो तो हमें भी पता है। प्रथमेश कह रहा है वी आर सेलिंग डियास फॉर 70 मोहक, अगर 100 भी मांगा मैड्रिड ने तो दे सकते हैं। एलियट जा रहा है फॉर 40, एलियट 40 में बिक रहा है। डोंट टेल मी एलियट यू आर सेलिंग एलियट फॉर 40। और हम That's why they didn't. That's why they didn't want to give him for the Wirtz deal. No, Ten Hag wanted him. They were getting भाई money. हम That means और हम smart, गर्नाचो very को smart. कौड़ियों के भाव बेचेंगे? सीरियसली? ओ माय गॉड, Bro, ओ माय। I won't be surprised though if we end up staying with Garnacho only. At the rate everyone is selling their players and we can't get a sell, no? See, after what has happened with Garnacho and between Emery and Garnacho, bro, पता नहीं मुझे। I don't think Garnacho will stay. God, I hope so, yeah. I hope so. And न्यूनेस फॉर 50 ऑल्सो। ये स्ट्राइकर एंड लेफ्ट विंग वाली डील्स अलग थी, ऐसा रिपोर्ट्स आया था। क्रेजी भाई। बट भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है भाई ये लिवरपूल पे? और 40 मिलियन कौन दे रहा है एलियट के लिए? सनडरलैंड? It makes sense though, yeah. It makes sense why they सनडरलैंड? didn't want to give Ten Hag the deal with Wirtz. Apparently, he wanted Elliot with money. Makes sense अल now. हिलाल है तो सऊदी क्लब ही, इसाक खरीद के वापस लोन कर देगा न्यूकासल को। नहीं, ये नहीं करेंगे, वो अलाउड ही नहीं है ना, ये अलाउड ही नहीं है। बाय द वे दैट जॉन डुरान डील लुक्स वेरी शेडी नाउ, सीरियसली। दैट जॉन डुरान डील लुक्स वेरी शेडी बिकॉज एस्टन विला के ऊपर पीएसआर बैठा हुआ था, वहां पर उन्होंने खरीदा आपके अल नसर ने, और फिर 6 महीने खिला के उसको लोन कर दिया उन्होंने अब फेनारबाशे को। दैट डील लुक्स वेरी शेडी बाय द वे, nobody is talking And about you it. remember they were doing that. There were like three clubs swapping their Yeah, players at the beginning. Was it yeah, Aston Villa, Chelsea, and somebody they were swapping players. that deal looks very shady by the way अब, क्योंकि हाउ कम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर 6 महीने बाद wanted to move out when he forced his deal, by the way. John Yeah, Duran forced his deal to Al Nassr. because the Watkins were they Arsenal wanted Watkins, Yeah, right? And yeah, they fought saying we can't sell both of them. yeah, it's crazy. Per Watkins now he they want to sell him now 1 year later. Would have Rodrigo been to an Chelsea Arsenal for player. 90 million. अच्छा हाँ, चेल्सी भी तो उतर सकती है रोड्रिगो के लिए। यस, बिकॉज अब उन्होंने मद्यूके सेल कर दिया है, उनके पास मुद्रिक है नहीं बैन के चक्कर में, एंड जाओ पेड्रो विल बी प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर रोटेशन में विद लियम डेलिप। तो यस, चेल्सी माइट बी इंटरेस्टेड, अगर वो गर्नाचो लेने नहीं आ रहे हैं तो यस, चेल्सी माइट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग रोड्रिगो। एंड चेल्सी देखो बिड सबमिट करेगी बस। चेल्सी ने गिटन्स खरीदा है, बट भाई हु वुड यू रेदर प्ले, गिटन्स और रोड्रिगो? टेल मी, इफ यू आर चेल्सी, who would you rather play, Gittins or Rodrigo? वेज तो दोस्त लिवरपूल भी नहीं देगा उतना, क्या बात कर रहे हो? चेल्सी तो वेज फिर भी ज्यादा दे देगा लिवरपूल के कंपैरिजन में। जैक्सन, गर्नाचो एंड मॉर्गन रॉजर्स में 3 वे पीएसआर सेटलमेंट भी होगा आगे, देखते हैं। We are getting Morgan Rogers, right? Which part of this three-way is benefiting us? I don't like this three-way at all. We are only getting the L, not getting any player. We are only getting the L out of all these deals. रॉड्रिगो, इसैक, सला, व्रिट्स, ये देखो लाला की तमन्नाएं, ख्वाहिशें देखो कितनी बड़ी हैं। लाला कह रहा है कि फ्लोरियन व्रिट्स, इसैक, साला और रॉड्रिगो, ये बात। कैन वी गेट कामाविंगा समहाउ? भाई कामाविंगा वुड बी अ ड्रीम साइनिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कामाविंगा वुड बी द प्लेयर that would directly fit in. He's a very versatile player. Oh, left wing back, right? He will be playing as a left center mid. I'm He'll be playing as joking. a left center A mid. joke. The joke that he plays anywhere. So, He plays anywhere, by the way. He has played as a left back as well. left back. He has played there. We'll put him up front and we'll play Hoyland at left back, just for memes. भाई तुम्हें तो पता चला होगा, मैं तो वॉच अलोंग कर रहा था, मुझसे पूछो मुझे क्या पता चला है वॉच अलोंग करते में। I was drained out. Today, Ahmad started as a right wing back, but then he swapped with Collier on the number 10 position. Soon, where do you think, guys, Ahmad will get most of his minutes with Mbeumo as a right wing back? I see him playing as a right wing back, honestly. कल हम ये बात भी कर रहे थे, Nathan and me were discussing, and हम stream पे भी discuss कर रहे थे. I see Ahmad playing as a right wing back rather than playing him as a number 10. That's what I see him play. What about you?
I agree. It's so, like I said, we have way too many number 10s. If we're not going to sell them, then other people will have to play in other positions. Why Hmm. aren't we getting Wesley Franca for 25 million? It's very simple mistake, insan. We are not looking at him. Very simple. You have to look at him in order to buy him. We are not looking at him. Simple. Today even, yeah, they are messaging this fellow's name, Lucian Agume. He must be really good. Yeah. Everyone keeps asking us why we कल भी should go बात for कर him. रहे थे लूसिया नगूमे के बारे में, आज भी बात कर रहे हैं, कौन है ये बहन का लंड लूसिया नगूमे? Then someone said at the before the transfer window started, apparently we were looking at some kid from Monaco, Akliuche or something. Bro, we'll have to write down these spellings to learn how to pronounce them at this rate. I prefer Bennett and Cooper and Rooney, dude. I don't know about you. They sound easier to say. अरे चैट जिसको चुल मच रही है चैट एड्रेस करवाने की, या तो सुपर चैट कर दो या मेंबरशिप ले लो। चैट सबकी एड्रेस नहीं हो सकती, जो मुझे दिख जाता है मैं एड्रेस में हाईलाइट कर देता हूं। प्रथमेश इज सेइंग आल्सो, और प्रथमेश यू वर अ मेंबर, यू शुड बी यू शुड बी शेमफुल कि तूने मेंबरशिप नहीं रिन्यू की है। हट। ऑल्सो लिवरपूल पे कोई और खर्चा नहीं है, स्टेडियम भी रेनोवेट हो चुका है और न्यू एडास डील 180 मिलियन फ्रॉम पीएल, 80 फ्रॉम यूसीएल, ऑल्सो नो ट्रांसफर लास्ट सीजन। क्या बात है भाई, क्या बात है। Lucian Agume is one of the rare kids doing good in Sevilla. Okay. ओगुचुकू को लेकर भी तो न्यूज थी कुछ कि यूनाइटेड ओगुचुकू, क्या ओगुचुकू ही है, क्या नाम है उसका? ओगुचुकू ही है शायद उसका नाम। Yeah. Chelsea player, right? Yeah. या अरे उन पे दो तीन उगू और चूकू पता नहीं कौन क्या क्या नाम के हैं, समझ में नहीं आता। उन पे दुनिया भर के तो प्लेयर्स हैं यार। एंड आकाश इज सेइंग गेस एवरीवनस कोच नाउ। मी? No, but और it's not that. we It's are not not that. coaches, bro. We are not coaches. It's really cool how it's like really cool how you guys know these people. I'm saying it in the other way. I'm like, people are like keeping tabs on so many leagues. I can't do that. I think it's really cool. Like imagine now this Lucian Agume comes, right? We can actually pinpoint to this person and say, man, this fellow was right. He was looking at this player profile and he saw it and we bought it and it worked out. Like, if we have such smart people in the chat, why can't we have some smart people actually getting paid by United to do this job? This would be great. They are worried about, canceling lunch instead of finding players. So अरे भाई हम तो, हमारा बस नहीं चलता वरना हम क्या क्या कैंसिल करा दें। पढ़ाई लिखाई वो होता था ना कि बेटा इतने नंबर नहीं है तो चूल्हा चौका करवा देंगे, दुकान खुलवा देंगे। तो हमारे मैनेजमेंट हमारे प्लेयर्स को यही डरा धमका के रखती है। हायर मी एज सून एज पॉसिबल फॉर व्हाट नवनीत? शिवांश इज सेइंग दैट यू शुड हैव साइंड सैमुअल रिकी, टैलेंटेड सीरिया मिडफील्डर ट्रांसफर टू एसी मिलान। ओके। see, like, look, this is, I guess, this is like the best example. I don't even know who that guy is, honestly. And I'm not भाई trying to say like the Serie A is crap. I मतलब मैं actually don't नाम know who that is. मैं नाम सुनता हूँ, मैं भाई कितनी फुटबॉल देखते हैं, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। एंड आई डोंट लिटरली नो अबाउट दीज प्लेयर्स, बट दीज पीपल डू, एंड इट्स क्रेजी कि हाउ मच टाइम डू दे इन्वेस्ट यार। Literally, how much time do they invest? How much, more importantly, how much they care about our club to look at players that we need to help our club do better. Absolutely, absolutely भाई, absolutely. लोग बहुत फुटबॉल देखते हैं, always believe we know much more about United than Amram. He's a better coach than us, but we watch United more than Amram. That's true. That's true. That's true. That is true. That is true. BG, believe me, if you put that on Twitter, no, they will call you negative. But Yeah. believe me, no, that is, I said that yesterday. I'm so tired of being lied to by the man, everyone, because we are the only people that last year. Everybody leaves, no matter what. Even The Ryan player Giggs leaves, eventually left. the management leaves, but we stay. Everybody. And when people lie to you, that's why I'm angry. That is why I'm angry at our club. Because we are getting lied to, which is really unfair. It's a really bad treatment of the fans. And what you said, no, is perfect. It doesn't matter if anyone's a good coach or a good player. At the end of the day, no, we take in the time to watch it. Whether you play for this club or don't play, no, we see every week. Bro, in a couple of days, we are going to play a game at 4:30 a.m. Indian Standard Time. Hmm. There's going to be lakhs of people watching that game. Chad, I'll do the watch along. Don't worry. I'm sleeping, bro. I can't be bothered to see this midfield.
I can't Nah, be. bro. Sorry. Nah, bro. I I'll told do it. Mohak, I asked Mohak before the stream yesterday, are you going to watch it? I'm like, bro, I can't be bothered to watch this football at 4:30 in the morning. 2:30 I'll do. I'll do the I do the in a couple of days I'm doing 2:30. 4:30 I'm out, bro. I'm done. Good night. नहीं, मैं सो जाऊंगा, मैं 10 बजे सो जाऊंगा, फिर मैं उठ जाऊंगा 4 बजे. तो I'll do it. Could do I'll that. do it. That's a good I'll do idea. it. I'll do it. Prathmesh, thank you so much for joining the membership. Welcome on board. By the way, दोस्तों, respect for you guys that you are supporting United at lowest, क्योंकि I know people जो Madrid fans बन गए, अब United बात भी करो तो बोलते हैं, मैं तो United fan था ही नहीं. यार अब वो उनकी चॉइस है ना दोस्त. देखो क्या है, जब डिफिकल्ट टाइम्स आते तो असली बेसिकली आपका कैरेक्टर पता चलता है कि आप कितना रहना चाहते हो साथ या नहीं रहना चाहते हो. टॉकिंग अबाउट अस, मैंने जब देखना शुरू किया था तब मैंने बहुत अच्छे दिन देख लिए, तो मुझे उन अच्छे दिनों की वैल्यू पता है. बट मैंने क्योंकि इतना सफर कर लिया है, तो मुझे पता है भाई जब वो अच्छे दिन आएंगे लौट के तो मैं क्या फील करूंगा. आई जस्ट हैव टू बी देयर. और more than us, I would say thanks to the people who started watching us during the most pathetic time period, and they still support the club. People like Amlan, people like Lucky, people like यहाँ पर अगर मैं बात करूं और तो प्रॉब्ली अरिंदम जो कि वरान चेंट है, या फिर और लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड को. इट्स जस्ट दैट it's their choice. See, nobody has the obligation to support only a particular club. It's their choice. वो कुछ लोग स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह देखते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स को और जिस क्लब को देखते हैं वो अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बैठते हैं. एंड अगेन, मैं अगर एक क्लब को सपोर्ट कर रहा हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू सपोर्ट दैट क्लब इन पर्टिकुलर. तो ठीक है भाई, इट्स देयर चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर. ठीक है. एंड आई हैव गॉट जीरो इश्यूज विद दैट, बिकॉज भाई वो देखो हर कोई ट्रॉमा लेके नहीं जीना चाहता. तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं बहुत खुले तौर पे ये चीज बोल रहा हूँ, तुम्हें चीज समझनी पड़ेगी कि लोग अगर यहाँ पर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाई वुड दे वांट एक्स्ट्रा हेडेक बाय सपोर्टिंग अ क्लब जो उनको पॉजिटिव नहीं दे रहा. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. लोगों के लिए अपना पीस ऑफ माइंड जरूरी है. वो तो हम और तुम यहाँ पर हैं जो ये चीज कर रहे हैं, बट आपको चीज समझनी पड़ेगी भाई. प्रथमेश, आप जिसके लिए भी ये चीज लिख रहे हो, मुझे नहीं पता कौन है क्या है, बट हुएवर इट इज, चाहे वो पहले बारसा को सपोर्ट करता था, अब वो यहाँ पर सिटी सपोर्ट कर रहा है, या वो चेल्सी सपोर्ट करता था अब वो यहाँ पर सिटी सपोर्ट कर रहा है, या वो यूनाइटेड सपोर्ट करता था अब वो यहाँ पर आपकी मैड्रिड सपोर्ट कर रहा है. राइट. वो उसकी पर्सनल चॉइस है. हम और आप अपने डिसीजंस लोगों पे थोप नहीं सकते मेरे भाई. उनको अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है. दे वॉच इट एज एक स्पोर्ट एंड इट्स गुड फॉर देम भाई. सिंपल एज दैट. Yeah, I युगादि think कहने. people, I think people, I think people consume sports differently. Like we were just having the discussion, like so Mohak does Chaos Club, right? And या a lot of the creators they wear like different jerseys. I'm like, या I could never. I grew up in an era where I could never do that. If I did that, I would have got cooked by my friends. Forget United fans. I would got cooked by my friends. They'll be like, "How are you wearing this jersey?" And I grew up with that mentality. And I'll explain why I suffer now. There are so many kits, no, that I genuinely like, but I don't have the courage to buy it because I'll feel shame. I'll feel shame. No one's going to shame me if I wear it. You guys will say it's a lovely jersey, good, but I will feel the shame. And it really bothers me because there are so many nice jerseys. I'll tell you one low key. If there are any Chelsea fans, last या year the cream with the red badge looked sexy, डिड. really sexy. I have to be honest, but I could never wear that jersey. Yeah, I couldn't. Couldn't. I could buy it for my friend. I'd be very happy to buy it for my friend. I could not. I could never wear it. And some people will wear the jerseys. They love to collect it. It's a culture now. I do it with other sports because I have no investment. I do it with any other sport. I except cricket. I will never do it in cricket. I'll only buy if I buy. I'll only buy Indian jersey. I'll never buy any other jersey. वो तो I वीडियो के can't. चक्कर में मैंने आर्सेनल जर्सी पहन ली, वरना मैं तो दूर दूर तक नहीं दूसरी जर्सी पहनता हूँ अदर देन मिलान या फिर अपने लीग के बाहर की. बट इट वाज Oh, बिकॉज ऑफ your दी. league though you can't buy. So your league though you can't like people get really pissed off if you're in the same league and you buy other people's jerseys. They get really angry. बट अगेन जैसे अगर लोग दिव्यांश को टारगेट करें, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, इट्स बेटर टू सपोर्ट वन क्लब देन सपोर्ट टू क्लब.
Divyansh had a soft side for United. He was always a Real Madrid fan. He used to watch United for Ronaldo. He used to support United for Ronaldo. The day Ronaldo left, he stopped supporting United. And I do understand his perspective regarding that because भाई उसका एक रीजन था यूनाइटेड को देखने का एंड जब वो रीजन खत्म हो गया आई डोंट सी व्हाई ही शुड कंटिन्यू पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ यूनाइटेड फैन इट्स सिंपल बट कुछ लोग होते हैं जो दो दो क्लब सपोर्ट करते हैं वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि एक टाइम पे आप दो क्लब कैसे सपोर्ट कर सकते हो इधर यू सपोर्ट एक क्लब को डाई हार्डली या फिर आप दोनों क्लब के बीच में कैसे डिवाइड करोगे अपना सपोर्ट पॉइंट ही नहीं बनता ना उस चीज का तो एनीबडी हु टारगेट्स दिव्यांश फॉर दैट भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंपल सी बात है दिव्यांश यूज्ड टू वॉच रोनाल्डो एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू वॉच यूनाइटेड once Ronaldo left United, there was a very little reason for Divyansh to watch United. Simple as that. Accept this. No need to target individuals for those things. Simple है ठीक है एंड यहाँ पर 1 मिनट सुपर चैट आई है यहाँ पर अंकित ने यहाँ पर मेंबरशिप रीजॉइन किया थैंक यू सो मच अंकित यार फॉर रीजॉइनिंग द मेंबरशिप वेलकम ऑन बोर्ड एंड रियल अंडरस्कोर थंडर्स थैंक यू सो मच मेरे भाई for the contribution. Prisoners should be allowed to watch United matches every weekend as part of their punishment. So you're calling us prisoners. क्या मैं और नेथन प्रिजनर हैं और ये जो ऑडियंस बैठ गई ये प्रिजनर है क्या? If you're saying this भाई नहीं भाई you're being very rude to us यार. Don't do this. आदित्य के लिए यहाँ पर W's हो जाए in the chat भाई. Thank you so much आदित्य for the contribution. Lots of love to you. And Nirvang, thank you so much for the contribution. Only happy United fan today is Gautam Gambhir. अरे भैया क्या भाई वो सर्दियों की क्लिप है अभी तो मुझे राधे श्याम के छोले भटूरे खाने हैं पक्की बात है मैं राधे श्याम के छोले भटूरे खाने जाऊंगा आदित्य पक्की बात है अंकित कह रहा है यहाँ पर अरे जो मन है उसको सपोर्ट करो इन माय ओपिनियन एनीथिंग दैट ब्रिंग पीस बिल्कुल मतलब देखो यार ये ओपिनियंस फोर्स नहीं होने चाहिए ठीक है कि भाई आपने everyone consumes sports differently basically simply भाई simply देखो put. मैं और नेथन स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं लाइफ की तरह जीते हैं बहुत सारे लोग स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह जीते हैं तो इट्स देयर चॉइस व्हाई टू बेसिकली मेक इट Let's forget picking any person women या women are the best example. They या don't understand. They do if they don't support sport. No, they don't understand why we cry, why we get angry. When they, what people, I'll tell you, the people who don't love sports, they are the saddest people in the world. I was watching a podcast the other day. There was a comedian. I won't take his name, because I actually like him. But he's like, I don't understand how these people say we won. I'm like, bro, do you understand when we say we lose? We keep the same energy for losing even. Why do you say we win like we only win? Every sports fans team doesn't only win a game, they also lose. And I was looking at him and I'm like, see, this man doesn't understand it. He'll never understand it. It doesn't, you can sit down there, you can tell him the history of the club, you can tell him why you fell in love with the club, but he will get stuck at we won, we lost, I am angry. He won't understand the mechanics of what sports is. We don't watch javelin, but everyone watch Neeraj Chopra throw that javelin. यस Bro, you can't make me watch javelin throw if an Indian person is not there. No, you can't make unless women are throwing. I might be interested, but men, no, to definitely not. I have no interest. I have no interest. Dude. Just zero. You can't make me. But the whole world stopped. The whole world stopped for him. The whole world stopped to watch him throw that javelin, and rightfully so. The weight of the nation was 100% on him and with him, and he got it done. So people who don't understand why people love sports, no, you can never ever convert those people into loving sports. You have to just let them have their opinion and walk. You can't get upset. You can't sit down and go, "Come, beta, I'll explain it to you." You can't do any of that. So just let them live their life. They don't get it. मतलब ठीक है यू लिव योर लाइफ लेट देम लिव देयर लाइफ भाई Absolutely. why to set expectations why to no I need mean, of that we can always talk about women. Hopefully, that we have in common. hmm. We can talk about something else. We don't have to talk about sports. Fair enough. यस करेंगे करेंगे ब्रो करेंगे F1 पे स्ट्रीम करेंगे 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 करेंगे
मोक एक F1 कार भी दिला दो भाई, वो वाली क्या मटीज वो दिला दूं, वो कौन सी Hot आती, हॉट Wheels. व्हील्स, हॉट Hot व्हील्स, Wheels. हॉट व्हील्स दिला दूंगा। बट चलो यार, आई थिंक आज के लिए इतना है। अब मेरे पिछवाड़े में सुई लगेगी, इंजेक्शन लगने का टाइम हो गया मेरा, ऑलरेडी लेट हूं मैं आज क्योंकि अंकल लेट हो गए, तो अब मैं जाऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेथन, मजा आ गया बात करके, एंड विल डू दिस वेरी सून। हो सकता है कल भी कर ले, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। इफ यू वांट टू Can ज्वाइन you इन, can you imagine? Can you imagine in a couple of days Manchester United are signing Lucien Agume? Bro, what laugh and we'll I'm have. doing I and will. I'm doing a live stream on how good Lucien Agume is going to be for United alongside you. Oh my god, I have to read all about him. I We'll have have to read to all about him. the highlight compilation is about to become a YouTube feed, dude. That's it. But I think ठीक है, मतलब if you keep aside आज का game, this is a happy weekend for all United fans अगर मैं बात करूं। Brian Mbeumo to United has happened, Rashford to Barcelona is happening, so it's a big victory for us. And yes, we got some positives from tonight's game, जैसे Cunha looked good, Leon looked good, Torgu looked good, you know, Aiden Haven and Lenny Oro looked very good, तो अच्छी बात है भाई। बाकी भाई, this is how life goes, and we hope to get good news in the coming days as well. I'll see you tomorrow. शेम भाई, इस पर मैं ऑलरेडी एक बार बोल चुका हूं, मैं आखिरी बार यहां बता दूंगा। मैंने एक चीज प्रॉमिस की थी when the India Pakistan war was going on, that I will, as much as I love Sadiq bhai, I will not call him on my channel because of what has happened between the two countries. I love him, I love him to bits for the person he is. He's like my elder brother. But मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मैंने ये चीज बोली थी, the day I'll invite him on my channel, the day I'll delete my channel. So it's not going to happen. I'm saying this very loud and out. This is from my personal end. That was my take. I'm not going to do it. For me, engagement is secondary, country is first, and I did that in all sanity and will with all emotions. So if you want that, it's your thing. That is not happening on my channel. Sorry for that if I've disappointed you. But chalo, that's it. That's it from my end. Baki, good night. Take care. Love you all. And I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.